Hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. और हाँ, मुझे पता है यार, बहुत लोग मुझे डीएम भी किए थे कि क्या हुआ भाई, आज बारसा पे मैन यूनाइटेड की बातें कर रहे हो, मतलब यू आर ऑलरेडी गिविंग अप ऑन चेल्सी. Definitely never giving up on Chelsea, you know that, no matter what the situation is. भाई नर्वस एनर्जी है, तो मैं सोचा बेस्ट वे टू डिस्कस अबाउट नॉट माई मैच, लेकिन ऑफकोर्स वो तो डिफॉल्ट आएंगे ही. फॉर बारसा वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, यार पहला व्यक्ति जो आप सोचते हो, मतलब एनीवन हु नोज द कम्युनिटी, एंड ऑफ कोर्स हम बात करते हैं भाई, ऑब्वियसली सादिक भाई, दैट वी थिंक अबाउट बारसा एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड. एंड लाइक मेरा हुआ था सादिक भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक. एसी मिलान चेल्सी हुआ था ग्रुप स्टेज में. पीपल भाई बहुत सारा मुझे बैंटर किए थे, आपका पता नहीं क्या हो रहा है अभी. नहीं, आपका तो फिर भी ये था कि यू आर प्रीटी क्लियर कि चेल्सी इज फर्स्ट एंड मिलान इज सेकंड. हाँ, इट्स अ सॉफ्ट कॉर्नर एट बेस्ट. हाँ, मेरा तो मतलब वो बोलते हैं ना, हार्ट का एक चेंबर वो है, एक चेंबर वो है, वो इस तरीके से स्प्लिट है. बिल्कुल. तो लेकिन यार आज तो हो ही जाए भाई. हुआ क्या, आई वाज ऑन मोहक स्ट्रीम, ठीक है ना. हाँ. तो मोहक के स्ट्रीम पे आई वेंट टॉकिंग अबाउट बारसा एंड आई सेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बारसा, आई सेड लेकिन हम जब तुम्हारे साथ, लाइक आई टोल्ड यूनाइटेड एज तुम्हारे एंड आई टोल्ड बारसा एज माइन. मोहक caught me and everyone caught me. Then that day I was on Nidhi's channel and Usman bhai was there and I said in context of United as hamare. So Usman bhai said अच्छा United is hamare. So it's like बेसिकली आप बैलेंस करा देते हो. यू आर प्लेइंग द बैलेंसिंग, मतलब क्या बोलते हैं नीडल. पता है यार, सच में बोलो तो even I don't know how I will react. Well, if Rashi scores, will I be like, I will be happy for Rashi, but then I'll be pissed off at whoever was defending him. Or if Lewandowski scores, the same would go. Because I still remember watching that Barca United final. मतलब 2009 वाले में तो I was like, okay, United is coming back. But then when वो जो second half फिर जैसे जावी ने खेला था, मतलब people talk about Messi and that header of Messi was brilliant. But वो मैच जिस तरीके से जावी ने कंट्रोल किया था ना, I mean underrated performance. Absolutely. So I was like, okay. And 2011 that was evident that the best team in world football was one, and United was literally the second best team. But there was a significant gap between number one and number two at that time. Yeah, there was. लेकिन कहीं ना कहीं वही ना, मतलब बारसा मैन यूनाइटेड जैसे, मतलब मैं रिलेट कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे याद है एज अ चेल्सी फैन, हम बैक इन द डे यूरोपियन कप में वी हैव बीटन रियल मैड्रिड, और रियल मैड्रिड चेल्सी हम बहुत सदियों से वी वर ट्राइंग टू हैव दैट, यार ड्रॉ आ जाए कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड चेल्सी. ऑफ कोर्स यहाँ नो यूरोपा लीग में फर्स्ट टाइम हो रहा है, बट जनरली मैनचेस्टर यूनाइटेड बार्सिलोना हैव काइंड ऑफ मेट ईच अदर. Badly for Manchester United, जब Barca have been near on almost the prime, and that is what you would say. I think it's both. Because people don't remember two of the most brilliant matches between these two clubs have ended in 3-3 draws, 3-all draws in the same Champions League. That was the 99 season when United ended up winning the treble. Bayern Munich was in our group and Barcelona was in our group. Barcelona ended up winning the double, but because it was a group of 3 teams who were going for trebles that season, like they had a different cup at that time. So Bayern had won that cup, Bayern had won the league, and Bayern were going for the Champions League, and they had reached the final. United obviously won the treble, and Barcelona जो थी वो double जीती थी उस season, and that is the season when Rivaldo won the Ballon d'Or. Right, 98, exactly. 99. Right. Again, when I say that, I meant in this century. Put it that way. हाँ, नहीं, even in this century अगर आप देखो, that 2006 वाला जो stretch था when Barcelona was in that Ronaldinho faced Manchester United. Manchester United faced them when we beat Chelsea in the final. I think even that season we faced them. Oh, right. अच्छा, In मैं the semis, अब याद आ रहा है we मुझे. beat them in the semis. And we came, and Ronaldo, I think, हाँ. missed a penalty at Camp Nou or something, if I'm not mistaken. Yeah, so 2 साल पहले I think it was Chelsea Barcelona, and I think Manchester United met Barcelona, and I remember there was a lot of correlation वहाँ पर कहीं ना कहीं, Yes, as to how the performance were. that was and like I know the first initial encounters of a young Ronaldo and young Messi. right. And then fan base भी ऐसा है ना कि Ronaldo fans, although Ronaldo spent a larger chunk at Madrid, but then people who followed, they know that Ronaldo, United, that is a history. Then Messi, Barcelona, that's a history. And those are the two biggest social media fan bases when it comes to football. I mean, even that day when we were doing the draw वाला stream जब कर रहा था मैं मोहक के साथ और हर channel पे,
You have a PSG Bayern being drawn in the UCL. You have Right. Madrid Liverpool, the previous final being drawn in the UCL. You have Chelsea Dortmund, a decent matchup. You Yeah. have In terms of Napoli. youth, I think it cannot be better. वो वाला Huh. मैचअप और of course बारसा मैन यूनाइटेड यूरोपा लीग में. Milan coming into the second round, the हाँ. resurgence. But what everyone was talking about was a Europa qualifier round of 32, quote unquote. But because it is Barcelona and Man United, हाँ. everyone's talking about that because those are the, like it or not, two biggest fan bases out there. I think Yeah. in the internet community, I think even Real Madrid would be a close third to those two, and probably the most vocal fan bases out there. Matlab, the biggest Yeah. It's keyboard basically warriors Real, are there in Barca, those. Man United, Arsenal. सोशल मीडिया में तो मेरे लिए. I think Arsenal is still a little less, but Barca, United, Madrid, and so if you have two of those clashing, यार पुदिन इज कंपैरिजन ब्रो रियली. मतलब जब बोला ना पुदिन ने, मैं देख रहा हूँ यार अरिजीत सिंह डेफिनेटली यार. देयर इज अरिजीत सिंह इन सादिक भाई. भाई सादिक बस भाई, यू फिर हैव द कल के टैलेंट ऑफ मैच के सिंगिंग लिए मैं आल्सो. कहूंगा अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना. हाँ भाई, सादिक भाई मल्टी टैलेंटेड. यू ऑल नो दैट, यू नेवर नो दैट दिस इज अरिजीत सिंह नहीं 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 समवेयर ऑन द नहीं लाइन. नहीं, अगर मैंने गाना गाना शुरू किया ना अंकित भाई, तो आपके चैनल पे कॉपीराइट नहीं लेकिन नॉइस पोल्यूशन स्ट्राइक आ जाएगा. एंड पीपल डोंट इवन आस्क मी. मैं तो मतलब भाई एकदम नेगेटिव से शुरू होता हूँ. बट अगेन भाई, सब लोग यार करीबन 100 लोग देख रहे हैं और उससे ज्यादा भी देख रहे हैं. सब लोग सबसे पहले लाइक बटन दबा दीजिए. यस, हम काइंड ऑफ वार्म अप किए, उसके साथ हम डिटेल में आएंगे. एब्सोल्युटली विल बी डिस्कसिंग टैक्टिक्स, विल बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ इट, नॉट जस्ट अबाउट द मैच. लेकिन बारसा एंड मैन यूनाइटेड जो हम बोल रहे हैं ना, द लेगेसी काइंड ऑफ इज रिटर्निंग बैक. तो वहां पर हम बात करेंगे वेयर आर द क्लब्स एक्सेट्रा, विद अ कपल ऑफ न्यूज बहुत इंटरेस्टिंग अबाउट बोथ दिस क्लब्स. हम डिस्कस करेंगे विद ओनरशिप एंड व्हाट नॉट. बट नॉट जस्ट दैट भाई, हम बात करेंगे ऑब्वियसली लिटिल बिट अबाउट आर्सेनल मैन सिटी जो आज रात को होने वाला है. एंड इवन बिफोर दैट, दो वी विल बिगिन विद थोड़ा सा रिव्यू क्विकली, बिकॉज वी ऑल वर लुकिंग फॉर. सादिक भाई ऑलरेडी हिंटेड अपॉन दैट. जो हुआ था कल रात को पीएसजी बायर्न, सादिक भाई, मतलब we have seen those 1-0 kind of victories over the years, me and Sadiq bhai, and we भाई feel that मतलब that is part of first leg of I will tell you Champions something. League. I'll be very honest. Hmm. I switched on my FIFA. Then I changed the video game to NBA 2K. Then I went to WWE 2K. But none of them could keep me awake to watch the whole game. Either of them. Neither Milan wala, neither PSG Bayern wala. मतलब ऐसा नहीं है कि बोरिंग गेम. 1-0 कैन बी एब्सोल्युटली एक्साइटिंग. चेल्सी बारसा बोथ वेज, 2012 वाला Yeah, भी और बाद वाला भी 1-0, बट बिल्कुल. दे वर चेल्सी एंथ्रॉलिंग लिवरपूल गेम्स. इन कप गेम्स लास्ट सीजन. चेल्सी लास्ट ईयर आप देखो 0-0 थे, सारे 0-0 थे, Yeah. बट दे वर एंथ्रॉलिंग फिक्चर्स. कल तो मतलब इट वाज लाइक पीएसजी इज लाइक, या तो आप गोल मार दो. वो इट वाज दैट पहले आप वाला सीन. पीएसजी इज लाइक आप गोल मार दो. बयान कहते हैं नहीं हम नहीं मारेंगे. उधर मिलान इज, उधर स्पर्स इज लाइक बायर्न सोच रही मिलान. ट्रेनिंग सेशन, एक्चुअली ये हो रहा था, बायर्न सोच रही ट्रेनिंग सेशन है और पीएसजी बोल रहा है ब्रिंग इट ऑन ब्रो. फिर हम रिएक्ट करेंगे. And even the other game, Milan Tottenham also, Milan got that really early goal, I think 5th, 6th minute में, 4th minute में through time. And after that, it was just the same. Spurs were like, okay, आप आ जाओ, आप गोल मार दो. Milan's like, नहीं हम नहीं मारेंगे, हम वेट करेंगे, we'll keep the tie alive. मतलब, and the rest of the football that's going on in the midfield ऐसा भी नहीं है. एक होता है, sometimes you can have a war of attrition, ठीक है? Like, I could see the United Barca game going that way. कि it could be 0-0, मतलब ऐसा होगा कि both teams are nullifying each other. They're like neutralizing each other. लेकिन उसमें क्या होगा आपको नजर आएगा कि कुछ tactical battle चल रहा है. There it was nothing. Joshua Kimmich was bypassing the midfield. I have to give credit to that 16-year-old Emery. Wayne Zaire Emery. मतलब ironically I was like यार इसको सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन मुझे याद है 16 साल का यार बंदा. उसने अपना पूरा बोलते ना ब्लड स्वेट एंड टीयर्स डाल दिया पिच पे. लेकिन ऑब्वियसली मतलब इफ यू आर अप अगेंस्ट किमिक एंड गोरेट्स्का, मतलब आपका तो बैंड बजाएंगे ना यार वो लोग. मतलब किमिक एंड गोरेट्स्का बॉस आउट बूसी एंड अदर्स एट टाइम्स. तो जायर एमरी तो इट्स मतलब इट्स अ शेम दैट ही हैड टू डू दैट. बट देन अगेन क्या ही बोल सकते हैं, इट वाज अ बैड गेम
on both the fronts. कहीं ना कहीं I think Galtier kind of gave too much respect. I know Bayern Munich maybe deserve it, लेकिन वो fact is even they have not been in terrific form. तो मैं surprised था कि कार्लोस सोलेर को आप basically use कर रहे हो भाई to kind of just against Cancelo to kind of nullify Cancelo. That was the only reason why Carlos Soler was on the pitch. सच में वो कुछ किया नहीं. Danilo I Pereira think ahead of Verratti यार, वो कौन करेगा वो? I think I दो can't तीन even दफा believe it. Carlos Soler got a very good opportunity with space in front of him where he could have picked up a good pass to either Messi or Neymar. He mispassed लेकिन exactly. he just उसने इतना गंदा मतलब even a miss push button on FIFA doesn't do that pass. मतलब उस तरीके का उसने पास दिया था. मतलब like, बहुत ही क्या कर lazy रहा है वाला भाई? था वो. But anyways, the thing was, I think what Galtier was trying to do was he is not playing the home and away kind of a thing. He knows home ho ke away ho. His team doesn't has the midfield that can keep control. Now, having watched Messi for so many years, having watched Neymar for so many years, and now even Mbappe, these guys need a midfield that can combat and that can keep control. I think Messi has never won big without a proper midfield, whether it be for Barca or it be for Argentina. Yep. इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कार्लोस सोलेर को यूज His नहीं किया best भाई. time in What he could Barcelona have. was when he had the proper mid. I mean, I would not say even if you put Carlos Soler, I mean Soler against Kimmich, Musiala, Goretzka. I mean that's not a matchup. Yeah, but at least Sadiq Bhai is an extra man in midfield. The midfield was like it was a training pitch for Bayern Munich in the midfield area. You know what I mean? Because they were focusing so much on Cancelo and Coman. Finally, वहीं से आया. They had given them कि अब middle से आओ and middle से we have to give credit to one man who proved his quality last night. That was Sergio Ramos. I think 100%. it was tasked. I think that we'll narrow our defense up, cover those wide players of theirs, and just kind of keep it. Yeah, I know most fouled player in the match. Obviously, Messi will be there because they have to take the ball away from Messi whenever he's getting the ball. And De Ligt was sticking to him basically. Yes, but the efficacy of Messi comes when your midfield is good enough to run the ball. That's when the defense cannot zero in on Lionel Messi. Okay, but tactically, if you see, if I am the manager and I know कि यार उसकी midfield को मैं ball नहीं चलाने दूंगा, then all I know is Messi पे ball आए, tactical fouls. Be physical with him. I know Messi can even beat that at times, but then you take your chances. When you're playing Messi, you take your chances. You choose between a rock and a hard place, and you take the lesser of the two evils, so to speak. Yeah. Foul him and let your midfield run the show. But I was impressed यहाँ पर Sadiq bhai with Pavard यार. Pavard actually made sure. I know last में red card मिला, 2 yellow cards. लेकिन Neymar मतलब he didn't have a sniff. Neymar didn't have a sniff. We underrate Pavard quite a lot. Why? Because he's played in those Bayern teams. But if you see 2018 World Cup final, Pavard is starting. Bayern's 1920 juggernaut, Pavard is starting. He is that utility piece. Like, I compare Pavard sometimes to a Gary Neville. Like a star-studded United team, but the right back used to be Gary Neville because he used to do those little things, that dirty work, that. But would you not say Jamie Carragher more? Jamie Carragher was like someone who's. Carragher and Neville were similar players. मतलब वो एक ही ilk के थे. Like what I mean to say is वो बंदा ना primarily central रहना चाह रहा है. मतलब ऐसा नहीं कि he wants to kind of stay wide. तो वहाँ पर क्या होता है? His natural tendency is to kind of get in those tackles और जो dirty work बोलते हैं ना, so called. I know Neville used to do a lot. लेकिन Neville was like he used to do the fantastic tackles kind of from the other side. Carragher kind of expected that. So Pavard is, I think for Barcelona यार, I know यहाँ पर Sabitzer का भी बात हो रहा है. Pudin पूछ रहे भाई Pavard to Barcelona, Sabitzer to Manchester United. मतलब दोनों. You see a fit? Pavard would be a good utility piece. I mean, if you have Sergio Roberto, I think Pavard would be a better upgrade over him, and especially with this concept that most teams are adopting. Although it's an old concept, if you go into the Rinus Michels का अगर आप strategy पढ़ो, फिर आप Cruyff पढ़ो, फिर आप Pep पढ़ो, so you'll realize that this back four turning into a back three is a very old concept. It's not a new concept. Exactly. मतलब it's a old concept being reintroduced. वो बोलते हैं ना पुरानी वाइन को नई बोतल में बेच रहे हैं अभी वो उस तरीके का चीज है ये. Yeah, even I remember Milan यार जब Christmas tree formation था, on paper Christmas tree formation था, but Cafu never used to stay there. नहीं, Cafu used to bomb forward and you had either one of Kaladze or you used to have when Stam used to be there,
Maldini used to play the nominal left back, but he was technically your left centre back. Left centre back, And exactly. and Cafu used to bomb forward, and you used to see at times Kaka drift out wide. Right. As a winger, या आपको कभी-कभी सीडॉर्फ मिलता था, या पीपो could also transition out wide with Sheva playing running in the middle. channels. बिल्कुल, बिल्कुल. And then Sheva playing the middle. So you could do a lot of that. So these are all old concepts which come from the 90s era when Ancelotti was early 90s when Ancelotti was playing under Arrigo Sacchi. Pep obviously was playing under Cruyff. तो वो सारी चीजें हैं. तो मतलब tactically speaking, Pavard could be a good addition to Barcelona. मतलब you need these utility players for a long But talk season. about that, Sadiq bhai, and we'll quickly switch to बीच में Barca United तो है ही main topic. Julian Araujo आज here we go हो गया है, and yes, अरे thank it God has been यार. confirmed. मतलब this was going to be the joke of the transfer market. 18 seconds. Few seconds का हुआ था ना, something like that. Miss. I mean, how can you judge 18 seconds? मतलब क्या वो stopwatch लेके बैठे थे? Which was more funny, this one, De Gea or Hakim Ziyech? I think Hakim Ziyech, though, I mean, with all due respect, वो Chelsea was being evil there. Exactly. I know it. भाई मेरे को लगता है पॉटर का एक जल्दी से कॉल आएगा भाई मेरा माइंड चेंज हो गया. Let him be there because I mean, like Potter was like भाई अरे अभी पता नहीं वो चलेगा नहीं चलेगा माडुए के वगैरह कोई एक तो रखो जिसको पता है क्या करना है राइट विंग पे. Yeah, but again interesting क्योंकि जा रहे तो that means Sergio Dest no future in Barca, pretty clear. नहीं because you are watching Milan, Ankit bhai, he does I think he he doesn't has even he's a right winger में रो रहा था ना. हाँ वो जो लास्ट सीजन में रो रहा था ना उसको राइट साइड पे आगे जाना आता है और लेफ्ट साइड पे डिफेंड करना आता है. मतलब इट्स if you play him on the left he is only a defensive fullback. Attacking wise he gives you nothing. Yeah. अरे ये संजीव का कमेंट में इंटरेस्टिंग भाई मोक भाई को बुलाया था दिव्यांश आई थिंक दे आर बिजी बट नो वरीज ऑन दैट यार. मतलब वी नो सादिक भाई आया हूं बारसा ही बोल रहा हूं यार. जब से आया हूं तब से बारसा ही बोल रहा हूं यार. ऐसा तो नहीं करो यार. भाई लेकिन सच में मतलब honest truth क्या है मतलब because every time I ask Sadiq bhai I get like vibe about okay is he like Barca or Man United. मतलब for me it's difficult to even pick यार knowing Sadiq bhai but that's how it goes sometimes, you know, क्योंकि आप इतना फॉलो करते हो ना over the years that sometimes you cannot pick one. It's like Sadiq bhai ने एक बार बोला था it's about you know picking your best out of the two kids you have. भाई my scene is I say कि मतलब people say when I say okay United I loved first because of Eric Cantona and Sir Alex Ferguson. But Barca is studied more. Barca is like you know that best friend of yours. भाई आप किसी को चाहते हो तो आपको छोड़ के जा सकती है. Best friend जो है आप उसके पास हमेशा उसके साथ हमेशा रहते हो. तो it's like that kind of a thing. Yeah. अच्छा ये तो this is a detailed question but just a brief reply. Cruyffian football wants to bend the opposition out of shape with the ball. The way the shape in which the team is defending, you want to break, you want to create overload and then create spaces while you have the ball with you. Catenaccio is the inverse of it, where their defensive shape is so solid that they push you into positions where with the ball you are in a different, where you are in a vulnerable situation. They press and then they hit. Example of Catenaccio if you want to see in the modern day of football, last year's Real Madrid. Yeah. Also, would you say Conte ka Italy? For the brief spell that Conte had, Italy. Conte I thought in that Euros he showed that. The thing was what Conte did was he took Catenaccio into all-out defensive football. He didn't play it like Catenaccio. क्योंकि क्या था आप बस पीछे रहो, stay behind the ball, and then he hit, and then press. हाँ, the one game where he did that, if you remember last year का वो जो Spurs का 3-2 win था over City. Yeah, that was a good example. That was where he said, okay, my team will stay to a certain point. We will let you do whatever you want to do with the ball in front. Once you move within a certain jurisdiction of ours, we will hit you with press. We will shift your position out, catch you off guard, then press, get the ball and hit you on the counter. उसमें ये नहीं है. आप देखो, people will say Catenaccio था, but it was 3-2. Catenaccio को एक bad rep मिला है कि it wants to keep the score 1-0. No, it wants to score more goals than you and allow you to score the minimum amount of goals. So in that, most of the time,
1-0 is the result. But if that's not being the result, then it will play in a different way. And one of the greatest examples of that is, if you want to watch the 94 Dream Team versus Dream Team. It was Cruyff's Dream Team versus Saki's Dream Team, which had been managed by Capello at that time in 94 Champions League final. And Milan destroyed Barcelona 4-0. Right. I think that's a great one. Capello, yaar, मतलब again one we don't speak about enough. But again, coming back to भाई यश भाई साहब भाई ये तो comment अलग ही level है. I know kind of ये week भी बहुत important है. Kind of putting that, Yash probably Yash has experience with that. I'm guessing that's why I'm probably getting this comment. But anyway, भाई we'll come to the भाई देखो, tactics. आपका वैलेंटाइन ना आपको लास्ट मिनट पे छोड़ सकता है, फ्रेंड आपको नहीं छोड़ता है. बिल्कुल. अच्छा, ये ना कल मैं बोल रहा था यार, जो हम बात कर रहे थे ना मानव का जो क्वेश्चन था ना, और बाय द वे एवरीवन, आई एम सीइंग ओवर 200 पीपल वाचिंग. होपफुली सब लोग लाइक दबा दिए, और ऑफ कोर्स कंसीडर सब्सक्राइबिंग. ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी. वी ट्राई एंड कवर कंटेंट ऑफ ऑल द टॉप 5 लीग्स एंड मच मोर. एंड बाय द वे, यस, हु एम आई भाई, बहुत लंबा समय क्या होता है ना, और मैं आज बता देता हूँ भाई, बहुत लोग मैं कुछ इनोवेटिव आंसर ढूंढ रहा हूँ तो काइंड ऑफ गिवन देम. When Sadiq Bhai is available, then Baba is not available. When Baba is available, Sadiq Bhai is not available. When these two are available, the rest of the two semi-finalists are not available. तो basically ये push होते रहा. But वो ये साथ में करने का थोड़ा मजा अलग है. तो मैं सोचा कि साथ में करेंगे, अच्छा करेंगे. लेकिन now everyone is available, so hopefully हम करेंगे वो भी बहुत soon. But talking about मानव का जो comment है ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं कल मिलान और स्पर्स में quickly if I have to touch up, I think वहाँ difference था. Both the teams after Milan scored early were trying to do that. और कहीं ना कहीं it was a proper battle that you're just waiting for it, लेकिन हो नहीं रहा था. So they were ending up in the battle. और you have to comment, कहीं ना कहीं स्पर्स का जो मिडफील्ड था बहुत ही यंग मिडफील्ड था. स्टिल दे काइंड ऑफ कॉम्पैक्टेड. और मिलान मैं तो लेता हूँ 1-0. आई विल टेक इट, टू बी ऑनेस्ट. इतने सालों बाद हुआ है भाई चैंपियंस लीग आउट ऑफ 16, 1-0 विक्ट्री. आई विल टेक इट नो मैटर व्हाट. लेकिन बिफोर गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ द यूरोपा लीग फिक्सचर, सादिक भाई एंड बारसा मैन यूनाइटेड भाई, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन फॉर दोस टू टाइज? हु इज गोइंग थ्रू? कौन सा वाला, आज के शाम का या नहीं, कल रात की जो है बारसा और बायर्न. देखो, आई हैव सेड विद ऑल टैक्टिकल और सारा लॉजिक लगाने के बाद, मिलान इज गोइंग 2-0 over 2 legs. I was thinking they will go 2-0 and 0-0 at इतने इनोवेटिव कमेंट्स आ रहे हैं ना भाई साहब. सॉरी या प्लीज कंटिन्यू. मतलब चलो बारसा वाले खुश हो जाओ ना, एंड में अंजलि मिलने वाली है. अच्छा, कमिंग टू द क्वेश्चन, मिलान 2-0 आई एम सेइंग वो 1-0 चला जाएगा. 1-0. I think they will take it. Oh my God, let's see. I still fear Conte, and bhai, I know Champions League Conte is not in too cups, good. It's not good. It's such exactly. a toxic combination. Ankit bhai, Spurs. Then you have Conte in a cup competition, and then you have Milan showing some resurgence. Matlab not a good combination. Not a good combination at all. Let's hope for the best यार. दूसरे वाले में तो you're saying PSG या Bayern? दूसरे वाले में पता है, I didn't think logically at all. I just said on vibes and because of Messi magic, and because Bayern did one thing that Nagelsmann said last year to Villarreal, and then they paid. उनके तो अलग उल्टा हो गया था. But Bayern scoring only one goal keeps PSG alive. And a team with Messi, Neymar, Mbappe, you don't keep them alive. You don't give them hope. Because for a Messi, for a Neymar, and for an Mbappe, it doesn't matter whether you're playing home or away. It just needs to be their day, and they will kill you. They just needs to have that little bit of क्या बोलते हैं, hope होनी चाहिए, क्योंकि it's only a 1 goal deficit. Go in, score 2. And Mbappe makes a huge difference. Na? The fact that Messi will be able to kind of, Exactly. Messi will have someone to play off. Correct. So I think someone who kind of runs, and of course pace भी है आपके पास, तो basically he has all the 3 dimensions in a way. The 3D बोलते भाई. I would honestly Emery was good, but I don't know why Galtier is playing Fabian Ruiz out of position. But I would rather go, if I'm playing this back three with 2 wing backs, Hakimi and Nuno Mendes. Nuno Mendes was brilliant yesterday. You have to give him that. Yeah. So Nuno Mendes, Hakimi, the back 3 as it is. Midfield, I would put up Fabian Ruiz and Marco Verratti, because they are both controllers.
Controllers, They're yeah. both controllers. Play with them. So it's like 5-2-2-1, or like a 3-4-2-1, and then play 3-4-2-1. Neymar, Messi just behind Mbappe. Makes Tell sense. I think Mbappe that that okay, मतलब उससे बात करो, कुछ भी करो कि भाई ठीक है, I know you love playing outside the left और वो सब, but this game if you are making the runs behind Delict and Upamecano and you occupy them with your runs, you are releasing Messi and Neymar. I think that can be. I think probably Galtier needs to do that. कहीं ना कहीं he was a bit too defensive. But anyway, let's move on. यहाँ I पे think he quickly was last hoping for question ले that. लेते हैं. He was hoping for that. Okay, let's take home a minimum 1-0 deficit. We are not in our best form. Our team is not completely fit. We'll have a month after that to get ready and come for the second tie. It's not too bad. मतलब I know हम बहुत बार सोचते हैं, लेकिन भाई मैंने, by the way, for all of you out there, for people who might not have got a chance to watch, late 90s or early 2000s, जो मैं Sadiq भाई kind of all the time talk and you all wonder, a lot of people, भाई एक वीडियो मैंने की Almighty Sports Plus पे, do check it out. तो ये है greatest comebacks जो हुए हैं ना in Champions League. I have put on basically obviously the Barca's and of course the Chelsea's and whatnot. मैंने बहुत सारे matches के बारे में बोला है, Manchester United as well, to be honest. तो डू चेक आउट दैट. अगेन ये मैंने किया था करीबन आई थिंक लास्ट ईयर जब हुआ था ना इस ये राउंड, तो उस समय किया था. तो इट्स बिन ईयर, बट बहुत अच्छा वीडियो, तो डू चेक इट आउट. मैंने एक्चुअली लिंक कर दूंगा नीचे. बट टॉकिंग अबाउट दिस, भाई इट्स प्रीटी ऑब्वियस अगर पीएसजी डोंट गो टू लैटर स्टेजेस, गाल्टियर आई डोंट सी हिम काइंड ऑफ बीइंग द लॉन्ग टर्म. ठीक है, लेकिन इफ एनीवन, मतलब लुइस एनरिके Luis Enrique, पता है, I think Enrique usually doesn't like projects where he's been dictated to. There's a reason why he left Barcelona after that. Bartomeu, when he won the treble and then Bartomeu got re-elected, and then Bartomeu, once he got re-elected, had a lot of power. So that's where Luis Enrique sort of, he doesn't like too much. He's like, he's a bit put off with such quote unquote, how do I put it, dictatorial kind of regimes. So I don't think Lucho will be very, very. I mean, he won't be very much at home. I think Lucho, if things go bad at your club, I think Lucho Chelsea manager बन सकता है, because the squad that you have right चल now. रहा है यार बातें. तो इनफैक्ट देयर आर मिक्स्ड रिपोर्ट्स. अगेन मैं आई विल टेक विद द पिंच ऑफ सॉल्ट. Clearly Fabrizio is saying कि नहीं it's Potter itself and that's how things are going as of now. But एक डॉर्टमंड के साथ खुदा ना खास्ता हो जाए कि we are out, I really feel that pressure will be big time on, not that it is already. Or Zidane, Luis Enrique, and I think maybe even call for Jose Mourinho coming back are actually coming on. These three are going around the rounds. Again, देखते क्या होता है. People calling for Tuchel back is not coming. But again, we'll talk about Chelsea tonight. हाँ, by the way, मैं live हूँ even for pre-match as well as for watch along. The most with Lucho will be Mikhailo Mudryk. क्योंकि मुद्रिक इज अ, मतलब अभी भी क्या हो रहा है, मुद्रिक इज अ काउंटर अटैकिंग विंगर जो ज्यादा पीछे नहीं आता, वो वेट करता है, ही लर्क्स ऑन दैट लेफ्ट विंग, रिलीज हिम द बॉल एंड ही इज ऑफ. अब Potter also tries to play a possession style ball. The one thing that when I was seeing Chelsea make all the moves, I was a bit worried was कि you have got too many variated players. मतलब Enzo fits because you're trying to play a possession style football. Enzo thrives in that. Yeah, Felix abhi yaar, is it's thriving. experimentation. To be honest, it's experimentation. Like that's हाँ, the reality of it. Signings है ना, अब जैसे Nkunku plays in a counter attacking style. मतलब Leipzig is more counter press, counter attack. So he's your plan B. He's not your plan A really, if you ask me. उसके पीछे आपके पास जो मिडफील्डर है वो एंजो है. एंजो बेंफिका में भी पोजेशन स्टाइल खेलता है, पोजिशनल स्टाइल खेलता है. पॉटर के साथ पोजिशनल में ही फिट्स वेरी वेल because it's his instincts. Cucurella did not work at La Masia because he was not a positional player. He went to Brighton initially. वहाँ पे Potter was playing more of a counter-attacking style, तो चल रहा था. But when he comes to Chelsea, and he has a Reece James, he has a Thiago Silva, he has a Badiashile now. Cucurella looks out of place because he is more of a up and down, मतलब counter-attack type. मतलब I genuinely still believe that Chilwell is the number one left back. Okay. So Chilwell can fit. बट उसमें फिर आपका लेफ्ट विंगर मुद्रिक देखते हैं. मतलब हाँ डाउट है, लेकिन आई स्टिल देखो चिलवेल हैज चेंज्ड हिज गेम. आप देखो व्हाट ही वाज एट लेस्टर वर्सेस व्हाट चेल्सी में आकर किया. ही हैज चेंज्ड हिज गेम. सो आई थिंक चिलवेल हैज दैट एबिलिटी. आई थिंक वो दिखाया है कि ही इज मोर ऑफ अ फॉरवर्ड थिंकर उसका पता है ऑन द पिच. चिलवेल हैज गॉट द आंसू फाती प्रॉब्लम.
मतलब if he pushes too hard, he gets injured. Correct. मतलब Correct. you have to accept that there are certain players whose मतलब नहीं उनके जो वहीं पर benefits सादिक होते हैं भाई ना, we needed a left-footed center back for that, and that is where Bardeshil really helps us in my opinion. उनके जो पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं ना, like a Reece James, he's big, he's explosive, but that is what also makes it difficult for him because his body cannot take that much of explosive energy at all times persistently on his body. तो वहां पे उसको प्रॉब्लम होता है. तो that is a little bit of a क्या बोलते हैं, the good with the bad that comes with such players. अब वो ये कैसे अडेप्ट करते हैं कैसे adapt down to करते the हो? Potter and the players. इसलिए मालो गुस्तो will be a brilliant signing for you guys. Yeah, Malo Gusto is brilliant. लेकिन राइट बैक तो हमारी इंजरी वाज द इशू विद रीज जेम्स, तो वी आर गुड. इट्स जस्ट दैट. नहीं मतलब मालो गुस्तो ये भी कर सकता है, मतलब ही इज सो गुड कि एट टाइम्स यू नो आप लोगों को जो इशू हो रहा है कि भाई एंजो के साथ हु कैन पार्टनर हिम इन द मिडफील्ड एट टाइम्स. रीस जेम्स इज अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर. he won the player of the year for कौन से क्लब में क्या था वो? विगन था वो विगन. हाँ विगन में as a CDM. CDM. That's what I was As a like crazy, exactly, right? as a right-sided double pivot में वो he won that, and Enzo plays left-sided double pivot, so it's like perfect. And play Malo Gusto as your 4-2-3-1. Malo Gusto as a right back, double pivot of Reece and Enzo. इंटरेस्टिंग थॉट्स, डेफिनेटली इंटरेस्टिंग थॉट दिखते हैं भाई. अगेन यार आई नो हम मी एंड सादिक भाई व्हेन वी गेट ऑन टू टॉक्स, I will tell you something. Tanishq, पता है why is he saying Dest greater than Julian Araujo? हाँ. Tanishq is a die-hard US MNT fan. Dortmund and US MNT, United States Dortmund men's is national team fan. remember Dortmund आधा US वही था ना. And guess what Julian Araujo did? There was a time when Julian Araujo, even in MLS right now, is rated as a higher talent than Serginho Dest ever was. The problem was he went to the US camp and then said no to US and went to Mexico because he's a dual national. Okay, I didn't know this. Especially I know why Tanishq does not like Julian Araujo, because he ditched the US national team. चलो भाई देखते हैं. अगस्त्या विल कम बैक टू दिस. यार हमने बहुत बात कर लिया आधी घंटा तक अबाउट अदर गेम्स. नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ द नाइट, एंड दैट इज थोड़ा सा हमने बात किया था, लेकिन भाई बारसा वर्सेस मैन यूनाइटेड अगेन, मतलब आर्ग्यूबली भी नहीं बोल सकते. आई थिंक दैट दिस इज अ टाई. इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ इन यूरोप दिस वीक, मतलब आई वुड वांट टू से दैट. आई नो हमने बहुत बिल्ड किया था, यू नो, PSG बायर्न एज वेल, बट बारसा मैन यूनाइटेड हिस्ट्री दैट्स क्रेजी. बट लीव आउट हिस्ट्री, we have discussed about the matches between the two already. Head to head Barca has the upper hand last 4-5 games में, but form में यार Barca 16 games I think unbeaten, 6 games unbeaten. Manchester United I know 6 है, लेकिन actually ज़्यादा होना चाहिए with the form that they're showing. Actually since November United has lost one game. That was the since crazy, early man. November. I can't even believe it, yaar. Is it the same United we are talking about? Sadiq bhai, remember last year वाला, and that also उस टाइम से जिस गेम में भी United has had Casemiro, they have not lost. Actually, in fact they've won most. एक draw है शायद, ऐसा कुछ है since November. And Barca since that loss to Bayern in the Champions League वो वाले मैच में, तब से बारसा नहीं आ रही है. The second game against Bayern, I think that is the, I think Camp Nou में they have lost only that match in the entire season, correct? हाँ, Camp Nou में हाँ सिर्फ हाँ यार, मतलब Camp Nou में they have lost, and the game is at Camp Nou, the first leg. And by the way, Sunny, yes, absolutely यार, Sadiq bhai and me, in fact, I remember the very first podcast we did together ना, we had this thing planned from them, but कहीं ना कहीं वही है, lot of things happened between in terms of World Cups हो गए, and the fact is I was covering a lot of cricket as well, तो कहीं ना कहीं मेरा jump ship हो गया, but hopefully we'll get on a regular thing as well. Absolutely good comment that absolutely. अंकित भाई ये आप अगर वंश का कमेंट ले लो तो इस चीज को भी once and for all मैं वो कर दूं, रिप्लाई कर दूं. हाँ ये भी कर लेते, ये भी हाँ ये आज रिपोर्ट आई, but if you see the source of the report is Marca. Marca, for those, I mean most of you know, Marca पिछले 30 साल से, मतलब 27 साल से जब से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ, I don't think I've ever seen a positive report about Barca coming out of Marca. और कितनी दफा तो मार्सा ने बारसा को लिटरली आप समझो सस्पेंड ही करवा दिया अपने रिपोर्ट्स में कि अथॉरिटीज अब पीछे पड़ गई हैं, अथॉरिटीज अब ये कर गई हैं. इसी का एक अगर हिंदी में बोलूँ खंडन, वो बारसा के ऑफिशियल पेज पे आया है, ऑफिशियल वेबसाइट पे, वेयर दे हैव सेड कि इट वाज बेसिकली अ पेमेंट टू एन एजेंसी. आई थिंक कोई मार्केटिंग एजेंसी या ऐसी एजेंसी है which also works with different other, मतलब it's a third party जिसको उन्होंने पे किया था.
and that third party works in the same role for multiple clubs, not just Barca. And they've clearly mentioned, we are strongly saying, नहीं, Diorerias में बाद में आया. Diorerias has taken that news from Marca. Initially it was reported by Marca. ये मेरे पास शाम से सर्कुलेट कर रही है. अच्छा, actually Sadiq bhai, let's actually clear it out. Bhai, I know there are a lot of people watching. I hope everyone knows the news is basically speaking, if I'm not wrong, the allegation by Marca by Marca is कि Barca paid the referees, referees, and then they said they paid the referees through this DANISL 95 company. But that company provides the same services to multiple clubs, and every club uses it for certain. And Sadiq bhai, I would like to clear it. It is not paid the referees to get a result in the favor. It is to pay the referees to not get biased results. That is what it was. That is what Marca is saying, that they paid the referees, because this same company provides certain services to the referee organization as well, and वो marketing services provide करती है बाकी को. तो बारसा का पेज अगर आप देखो ना जाके, the official website of Barca, they have clearly said that we are also warning तो नहीं है, लेकिन in more gentler terms they have said that we would say them not to defame our name. कि ये जो outlets हैं, media outlets, वो झूठे तरीके इसमें मिर्च मसाला लगा के बारसा का नाम defame नहीं करें. और वो इन्वेस्टिगेशन जो है ना, इट्स नॉट एन इन्वेस्टिगेशन स्टेज अभी. मतलब आई थिंक दैट इज व्हाई वो मिर्च मसाला जो बोल रहे हैं ना सादिक भाई. नहीं, एन इन्वेस्टिगेशन भी मेंशन किसने किया है? मार्सा ने. देयर इज नो अदर ऑथेंटिक जर्नलिस्ट फॉर बार्सिलोना हु हैज सेड देयर इज एन इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन. नहीं, तो कोई इन्वेस्टिगेशन है ही नहीं. मतलब इट्स मैं लाइव था मैड्रिड पंडित पे, और उस समय आया एक्चुअली, और मैं जैसे ही आया ना, मैं बोला न्यूज़ सुनने से पहले ही बोल दिया टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. इट्स मार्सा. ऑनेस्टली मैं आई एम अ न्यूट्रल पीपल. आप देख लो यहां पर. नहीं, इट्स मार्सा फॉर बारसा इज लाइक, मतलब वो कब से पीछे पड़े हुए कि किसी तरीके से बारसा इनको किसी स्कैंडल में फंसाओ. एंड व्हेन मार्सा नेवर हैज एनी न्यूज़ ना, मतलब टेक मार्सा लाइक जेरार्ड रोमेरो फॉर बार्सिलोना. जब कोई न्यूज़ नहीं है तो कुछ भी बनाओ पॉजिटिव, और मार्सा कुछ भी न्यूज़ नहीं है तो बनाओ नेगेटिव. इट्स एज सिंपल एज दैट. यार आई नो मैं शॉर्ट आउट ही देना चाहिए, वो तो बंद ही होने वाला था समर में भाई. अभी विंटर में मैनेजिंग बारसा भाई क्या रिपोर्ट दे रहा था यार इस भाई. जेरार्ड लिटरली, आपको पता है मैं उस वक्त जेरार्ड रोमेरो की स्ट्रीम के बाद जो ट्वीट्स आ रहे थे ना, मैं उनको पढ़ रहा था, एंड साइमल्टेनियसली आई वाज रीडिंग हाउ मैनेजिंग बारसा वाज डूइंग इट. तो जेरार्ड रोमेरो सेड देयर इज स्पेकुलेशन के समथिंग माइट लाइक दिस हैपन. मैनेजिंग बारसा लिखता था जेरार्ड रोमेरो से कुछ तो हो गया है, बल्कि उसके साथ ये भी हो गया. मतलब इट्स लाइक मिर्ची भी लगा दिया, मसाला भी लगा दिया. मतलब आई यूज्ड टू बी लाइव इन द ड्यूरिंग द ट्रांसफर विंडो ना, लोग यहां बोल रहे हैं, मैं चेक करो ट्विटर में भाई ये तो बोला नहीं है. बट एनीवे भाई बहुत लोग पूछ रहे हैं अबाउट ट्रांसफर्स एंड दे आर कमिंग टू दैट. अराहो का भी सेम प्रॉब्लम है, वही है कि नॉट जूलियन अराहो, रोनाल्ड अराहो, द सेम इशू एज रीस जेम्स, कि दे आर बिग, दे आर फिजिकल, बट दे कैन गेट इंजरी prone quite a bit. Yes, absolutely. नहीं, that's a good comment. लेकिन coming back to the starting 11 यार, again tactically speaking, भाई Erik ten Hag should be given a lot of praise यार. The fact is इस टाई के लिए he knew that Lisandro Martinez is suspended, ठीक है, and he knew that, and if he wanted he could have gotten back Harry Maguire as your starting centre back more than Luke Shaw. लेकिन he said नहीं, I'll get Luke Shaw, but at the same time you have a Lewandowski, you have coming back to form Rafinha almost. Would you be tempted to kind of still go with Luke Shaw if you are Erik ten Hag? Yeah, because it depends how you because it's not just that we have to play defense. United also has to build attacks, and yes, most of the time our attack will come counter se, but our counters have to be swift and accurate. Against us, our counters have to be swift and accurate against us. मेरा वो वाला सिचुएशन चल रहा है. Everyone got it right. I hope everyone got it. That is the good one. भाई that is Sadiq bhai for you. But यार यहाँ तो I think डालो ही खेलना चाहिए, नहीं मतलब I know that. I think डालो खेलेगा because see अगर आप दोनों टीमों का tactical setup देखो ना, it's very similar. United builds up 3-5. Barca also builds up in 3-5. Very similar setups. So in the 3-5, if you have a Malacia, what will happen on the counter is you will see Malacia tuck in and sort of become that third centre back when United is on attack, and Luke Shaw venture out forward on the left. Okay. Defensively short, and defensively they will switch.
अच्छा, तो you मतलब Malaysia, Malaysia playing that role, हाँ मतलब I can see him that is doing what he that does. in That is what Eredivisie. he does. क्योंकि Malaysia usually inverts from the left हाँ, but inside लेकिन and add again numbers to against the this midfield. one, you know, अब देखो, I know Jules Kounde you not associate him with doing that runs, लेकिन मुझे लगता है in a very strange way ना, Jules Kounde might be a great outlet इस वाले मैच में. I feel मतलब because More of the than fact that Jules Luke Shaw Kounde, also likes to bomb on from that I centre think half more than position. Jules Kounde, the thing that gives me real worry about United is Mm-hmm. that Gavi and Pedri, they press the goalkeeper real well. Yeah. Lewandowski presses the centre back, and Gavi and Pedri, one of them, उनको जब मौका मिलता है, the thing is they're natural pressers, they're instinctive pressers. मतलब ऐसा नहीं है कि you have to teach them how to press. From day one जब से वो आए हैं बार्सिलोना में, you will notice one of the very good traits of the ball is कि वो off the ball press करते हैं बहुत गंदे तरीके से. And when they are playing in that, like when he plays in that lower role, so he presses real well. And I will honestly, अपने जॉर्डी एल्बा दिखाया, I'll not put Jordi Alba even if he has experience, Balde. because you will either have Sancho on that wing, or what Ten Hag is doing really well is he's switching Weghorst in the middle, where वो जीरू Weghorst, वाला खेल रहा है ना, जीरू जो 2018 में खेल रहा था. and then Sancho, Rashford moves in here, Sancho goes left, Bruno goes right. करेक्ट, करेक्ट. नहीं, आई थिंक इसमें हियर प्रेसिंग यू में ये कैन. होता है, प्रेसिंग में ये कॉन्सेप्ट होगा. विदाउट बुस्केट्स द प्रॉब्लम दैट बार्सिलोना मे हैव इज कि he will use Rashford to press the goalkeeper, because you have to press Ter Stegen. You don't press Ter Stegen will rip you apart with his ball distribution. ठीक है ना? You have to press Ter Stegen. So if Rashford presses on Ter Stegen, Wout Weghorst will press on Christensen. What people are not realizing is when we build from the back, Ter Stegen gives the ball to Christensen. And And then Christensen is the main person. And then Frankie comes down and takes it. Frankie probably will be marked out by Casemiro. Or no, I think Frankie को ऊपर डालेगा वो Fred को. Similar role what he did with either Frankie या Pedri, दोनों में से किसी एक पे वो Fred को डालेगा, similar to what he did with De Bruyne in the Man City वाला game. Okay. Because we have no options. We have to play Casemiro, Fred लेकिन and Bruno. आयरनी होगा अगर कैसेमीरो फ्रैंकी को ले. If you know वाला चीज. Yeah. Man I United. mean, Casemiro will go for Frankie, and I think probably Fred will go for Pedri. And if that is what is happening, I think Casemiro will mostly play not man-to-man press, but more of that channel press, that shadow press on two of their players, because you also have a Frank Kessie there. So Casemiro will play that shadow channel wala disruptor that is perfect about. Interesting. लेकिन हाँ भाई, एक जन जो I think is a So if standout, लेकिन Weghorst सादिक भाई. can press Christensen real well, And that that build will up give Rashford the space, no? that build-up can be rushed. And if that build-up can be rushed, Barcelona tends to go long, where United will then have a little bit of an advantage, because United is excellent in winning second balls and going up for those challenges. So once they disrupt, like if you go slightly long, United will go for the headers. Second ball, United is a killer this season. मतलब second balls, I think अगर आप stats भी देखोगे तो United is probably right up there with the best teams in Europe. And once you get that second ball, Rashford's on, and not just Rashford's on, Sancho's on. You have Bruno making the run, and you also have Dallo making the run from one side. Like depending आपने कहाँ बॉल जीती है, उस साइड का फुल बैक रन मारता है आगे. Then you have counters to hit. जहाँ पे you need to have, again, as someone was saying, back. Balde track back will be brilliant, because if not, even if United wins the ball on the right, what Ten Hag will do, he will switch Rashford middle, push Sancho on the right, abuse Alba on that wing. बॉल मिले राइट, मतलब अपने राइट पे, एंड बारसा के मतलब यूनाइटेड के राइट पे और बारसा के लेफ्ट पे स्विच कर. एंड लेवेंडोव्स्की भाई देखो, पीपल आर सेइंग कि लेवेंडोव्स्की नीड्स टू स्टार्ट स्कोरिंग गोल्स. लास्ट गेम यू हैव टू आल्सो गिव क्रेडिट टू पेपेरेना. दोस टू सेव्स दैट ही पुल्ड ऑफ वर ब्रिलियंट. मतलब दैट वाज पेपेरेना ऑफ लिवरपूल याद आ गया मुझे तो. हां, वो ऐसे सेव्स पुल कर सकता है. ही इज 40 सादिक भाई. लास्ट गेम हाँ, he started in Barcelona La Masia, and मतलब Barcelona C in 1999. देखो 98-99 में बार्सिलोना सी में शुरू किया था उसने. तो बेसिकली लेवेंडोव्स्की का पिछला गेम वाज अ परफेक्ट ऑल राउंड स्ट्राइकर का गेम.
That's like, जैसे मैंने बोला, if you play Alba, Barcelona, United will abuse the right flank. They'll keep bombing. They'll keep doubling over there, given every opportunity. राइट. अच्छा, ये सादिक भाई, ये क्वेश्चन आ रहा है बार बार भाई. अगेन वी विल एड्रेस टू लिटिल बिट ऑफ ट्रांसफर्स एज वेल. इंडिका, आई थिंक कल आप मैं लाइव था, आप बोल ही रहे थे दिस इज डन. सो अगेन आई थिंक ही इज अच्छा लेफ्ट ऑप्शन फुटेड, है. राइट? He's left-footed, and last season तक he was just a very strong defender. मतलब he was a very good defender, but his ball playing was a little suspect. But this season he has added that to his repertoire. But obviously not as good as a Christensen, not as good as a Unde. But you can say last year का जो Araujo था ना, like defensively, तो I think अगर one-on-one defensively बात करने हैं, तो he can probably even match Araujo, not in the overall game, but like just in a one-on-one situation, Ndika is Got it. as good. मतलब he is that genre of a player in a sense, हाँ. right? तो मतलब he लेकिन is at the end of the day, it doesn't mean कि if this is true, मतलब it's not formally officially done, right? Obviously, नहीं, this it's is something almost that done. Almost done. March में Barcelona will go through their financials, क्योंकि मार्च तक थोड़े और क्लैरिफाई हो जाएंगे, बिकॉज यूरोपा लीग का पता चल जाएगा, दूसरी चीजों का पता चल जाएगा. So if those financials are sorted, then in March या late March, early April, Barcelona will probably announce it. Okay, we have had the deal done, and because he's free ना, he's free to go in the so summer. but does it mean even from the start? I know ऐसे तो खेलते ही है back three while in gameplay, but does it mean proper back three जा रहे हैं and नहीं Eric नहीं नहीं Garcia at नहीं the end? नहीं नहीं, एंडिका को डालेंगे एज अ बैक फोर ही, लेकिन वही हो जाएगा, वो बैक थ्री में हो जाएगा, बिकॉज एंडिका also has a very good trait. Endika's trait is just like, you know what why I said Araujo, because he can defend space. मतलब अगर आप फ्रैंकफर्ट देखो, फ्रैंकफर्ट वो जब लो ब्लॉक में जाते थे तो वो एक स्ट्रिक्ट बैक थ्री बनाते थे जो एक साथ रखते थे. Unlike what a Kukurea does. हाँ, लेकिन when they are transitioning, तो लेफ्ट साइड पे उसके साथ होता था मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट 2 सीजंस में फिलिप कॉस्टिच. Kostic is a defensive vulnerability. Kostic is right up there. Correct. तो जो left space है ना, because what does Araujo does? Araujo defends that right space. Similarly, Endika can defend the left space. Yeah. No, he has that trait. मतलब defensively he has that trait. लेकिन Eric Garcia definitely I can't see him यार. मतलब his future, what is future in Barca? यार अंकित भाई, Eric Garcia is only 22 right now. लेकिन मैन सिटी में सेम था उसका, इसलिए वो गया. सॉरी, एक मिनट अंकित भाई, जस्ट गिव मी अ मिनट. हाँ, मतलब अगेन भाई, सब लोग जो भी देख रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब यार. सब्सक्राइब बटन आप भूल जाते हैं बहुत बार. सब्सक्राइब करिए, लॉट ऑफ कंटेंट आपको मिलेगा. हिट दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन एज वेल. बाय द वे, पीके हेल्थ, थैंक्स. यस, वी आर लाइव फॉर प्री मैच एज वेल एज वॉच अलोंग आज. सो यार मैंने सेटअप कर लिया स्ट्रीम. डू जॉइन अस. एब्सोल्युटली, वी आर जॉइन विद टू ब्लूज एज वेल. लेकिन हम रिएक्ट करेंगे फॉर द प्रीमियर लीग एज वेल. बढ़िया सादी भाई, प्लीज कंटिन्यू. अंकित भाई, एरिक गार्सिया को नहीं, पेप होता तो उसको मिडफील्डर नहीं बनाता. एरिक गार्सिया का इशू वही है जो क्रिस्टेंसन का इशू था अर्ली डेज ऑफ चेल्सी में. ही वाज नॉट फिजिकल, बट ओवर द इयर्स, मतलब a 21-22 year old Christensen was easily bullied. Yeah, I hear you जो बोल रहे हो आप, लेकिन कुछ नहीं था, मतलब उसको फूक भी मारते थे तो वो उड़ जाता था, वो वाला बात था. But he needs to put that, and some defenders are like that. मतलब no one thought कि Christensen will turn out to be this Christensen in Barcelona. मतलब honestly he is I mean, I don't want to jinx it. नहीं सादिक भाई, मतलब थोड़ा सा मैं इफ आई कैन कम इन क्विकली. देखिए, आई फील दैट क्रिस्टियनसन फुटबॉलिंग एबिलिटी, आई डोंट थिंक मैंने खुद क्वेश्चन किया है इन द लास्ट से आई वुड से 48 मंथ्स इन फैक्ट. मतलब द गाई डिफेंसिवली, मतलब ऐसे, मतलब आई नो लास्ट जो चैंपियंस लीग विनिंग सीजन था, इट वाज एक बहाना था हमें विद द यूरोज दैट ही हैड, दैट डेनिश मार्लिंग एंड ऑल दैट. बट एक्चुअली स्पीकिंग, एनी प्रॉपर चेल्सी फैन हु एक्चुअली वॉच्ड हिम फ्रॉम द एकेडमी डेज ना, I feel that when जब हमने एकेडमी में खरीदा, by the way, yes, we bought him from Brøndby and it was for the academy, and then he kind of Mourinho के सीजन में हुआ था 2013-14. For me, he was always a very good center back. Problem जहाँ I think there were 2 instances. Remember, one was against Barcelona, आपको याद है, Barcelona के साथ I think he defended badly one game. Then actually 3. Then there was a Bayern Munich game. Bayern Munich लॉकडाउन लैम्पार्ड के अंडर, ठीक है, जहां पर भी लॉस्ट बैडली. एंड एक्चुअली एक मोमेंट याद नहीं आता लोगों को, जो साडियो माने के अगेंस्ट वो ही गॉट अ रेड कार्ड. ठीक है, दोस 3 मोमेंट्स काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल, लेकिन वो साइकोलॉजिकली आई थिंक ही हैज वो सारे मैच में उसका पार्टनर कौन था इन डिफेंस? किसमें? वो सारे मैचेस में हु वाज हिज डिफेंसिव पार्टनर? आई थिंक वन ऑफ देम वाज रूडिगर. ठीक है, वेयर रूडिगर इन द बैक फोर.
Rudiger in a under back four. Lampard, remember Rudiger did not do well. Okay, हाँ, that was one of the so reasons. Rudiger in a back four is obviously not a very good partner. I think Madrid fans will अच्छा, tell that to you. लिवरपूल वाले में टोमोरी था. Again, It was a a young young centre fit back Tomori. partnership. तो Correct? इधर अगर आप देखो तो he has a Kunde, Araujo and a Balde on the other side. So they are मतलब he has the freedom where he knows I can venture forward because I have got two cheat codes of defenders like Araujo and Kunde who can cover. They're like vacuum cleaners. They can cover anything behind them. तो कुछ भी गंद अगर हो भी जाएगा उससे, जो कि नहीं हो रहा because he's so confident. मतलब you are right. Christensen is always a confidence player. मतलब when he knows ना कि यार अगर मैं Correct. गलती करूंगा भी तो पीछे कुंडे Araujo हैं, तो he या plays the Thiago Silva confidence. के अंडर ही काइंड ऑफ ब्लू लाइक क्रेजीली फास्ट यार. मतलब जो उसको पता था ना, I have Mönchengladbach में, Silva रिमेंबर next to me. Mönchengladbach में प्रेशर नहीं था ना. He did awesome. I would argue that those were two of the best years that you could see. जो Borussia Mönchengladbach में था. But I think it's great to see him do well, to be honest. Even when people talk about that Real Madrid wala match last year, where he had a howler, but you have to realize कि एक तो वो न्यूज़ निकला था कि he was psychologically a little. He wasn't switched on, Sadiq Bhai. That's the reality. He was mentally not there. Correct. So when Christensen is mentally not there, then it's the big thing. But I think at Barcelona so far, touch wood, and I hope 2-3 साल ऐसा ही खेले अच्छे से. नहीं करेगा, अच्छा करेगा. बारसा में I think under Xavi, I think he's got the right manager as well. I feel. I think he needs that coddling. Tuchel was too much of a क्या बोलते हैं tough task master वाला बात हो जाता है ना. टास्क मास्टर बहुत ज्यादा, माइक्रो मैनेजमेंट एंड ऑल दैट नहीं चलेगा. प्लस एट द सेम टाइम एक और चीज बोलूंगा, फुटबॉलिंग वाइज भी ना, जो आपने समझाया ना दैट क्रिस्टियनसन व्हेन यू गो काइंड ऑफ बैक थ्री, क्रिस्टियनसन आप देखो व्हेन आई व्हाई सेड Mönchengladbach, वो जो 2 साल में ना ही वाज प्लेइंग मोर लाइक अ क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट लाइक अ रूड हुलिट रोल. यू नो व्हाट आई मीन? Wide right, वो middle center back who ventured a little bit forward. Correct. He used to drift forward, centrally. वो हमेशा रहता था, and that is what he said. जो free role मिलता था ना, which is something that Barca will be able to do that maybe with Indica coming in. वो possible. जैसे आपने बोला, Indica is someone who kind of defends space. So I think maybe he's the right partner. Who knows? But maybe let's see if we are going back three and all. But coming back to Barca, Manchester United, Sadiq bhai. Again, in terms of record, I know that it's not been great in terms of Barca and Europe. मतलब very strangely, Camp Nou में बहुत अच्छा record है when it comes to this season. लेकिन यूरोप में I think you lost like 5 out of the last say 12-13 ties if I'm not wrong Europe में. Is there a thing about Camp Nou in Europe? Is it the pressure? There is something, right? क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत badly you've done right in the last couple of years as well. मतलब there has to be some correlation in terms of दोनों seasons में हुआ है not finishing in the top 2 in the Champions League. Do you think those things will come back? Mind game? किसका क्या कह रहे हैं? बारसा का basically नहीं मैं बोल रहा हूँ बारसा का at home in Europe they haven't done well at home. ठीक है, वो तो है especially in the last 3-4 years because Barca in the last क्या बोलते हैं 11 games 5 times they have 5 losses and prior to that it took them almost I think 250 games to register 5 home losses in Europe. That's what I'm saying. It's थोड़ा सा concerning है मेरे लिए. नहीं exactly, so it's been quite a bit. Yes, I agree कि इंजरी का आप बोल सकते हो शुरू में अभी, and right now the squad is fit except Dembele, which is obviously a big loss, but है थोड़ा सा. Fair enough. अच्छा यहाँ पर Casio Pedri, I think interestingly, I think Gavi is being played as a leftish channel, if I'm not wrong. आजकल I think it's more how do we line up? Araujo depends on the opposition you're playing. उनका left winger कैसा है? You're playing Kunde, Araujo, Christensen, and sometimes when we are really going for it, Araujo you will notice has shifted to the left side, and Christensen's taken that middle spot. Right. Then you have a Frankie on the left pivot channel, and the right pivot channel. Sometimes if Frankie's in the left channel, then this one, what's his name, Kessie comes to the right. Okay. But you also see Pedri there, and then you see 2 number 10s. Gavi is definitely the left-sided one. The right-sided one keeps changing Kessie or Pedri में से. And one of them then bombs forward as the second striker or as just playing behind Lewandowski in a shadow, and the other one goes a little bit wide but not absolutely wide,
this is अगर मैं नापोली का गेम किसी ने देखा होगा, they go into that Zielinski role in that left channel half space. And widishly you have your left fullback. Either it is what is his name? Balde Alba, or it could be Balde. Right पे आपके पास Rafinha होता है. So it's basically a 3-2-2-3 is what it becomes. I think that makes sense. Makes sense. लेकिन options भाई. Now the pivot that people are talking about, because we don't have Boosie. If Boosie would have been there, it would be Frankie Boosie, no questions asked, playing that pivot, and the front two would be Pedri Gavi. Simple. Right. And Kessie would have come off the bench. Now, but I will go the other way, Sadiq Bhai. Don't you think it's in a strange way a blessing in disguise that अभी या future के लिए भाई जो हो गया वो करना है ना बारसा को. I think in this few weeks you have got it, यार. मतलब मैं बोलता हूँ Rafinha and De Jong have been like actually very good, I would say, in the last couple of weeks. Definitely. The one thing that we have to sort out, I think people are a bit confused. Pedri and Kessie का में से कौन double pivot खेलेगा, that will depend on the opposition. Now a United like team, क्योंकि उनको पता है कि we have to mark Pedri. We can't give Pedri the ball because he can dissect United to pieces. So what I would prefer as Barcelona, I would keep Pedri in the pivot, because I would invite that press from Fred and Casemiro up. Acha, interesting. Keep Kessie there to keep making those runs in the channel. Releasing him, Rafinha out wide, Alba out for the switch available to you, and Lewandowski in the middle. Because they will not zone in so much on Kessie. And Kessie could be that forward. Maybe Erik Ten Hag, being a tactician, will put Casemiro? I think he will not put Casemiro on a man. Casemiro will be that screen. Okay. Or plus passing ability, you don't want to take away from Casemiro as well. Exactly. So he will put Fred, he will ask Bruno to press like a dog. Absolute. Dalot can press, because Dalot tucks in, gives you that extra midfielder who can then press and try to win the ball. The one person we will really miss that not many people are talking about is Anthony, because he's injured. और काफी लोगों ने Anthony को बहुत flack दिया है, despite him already scoring 5 goals. But which as a winger is pretty high. But what people don't think about Anthony is when Anthony is playing Dalot या जो भी right back है, he can easily tuck into the midfield, because Anthony defensively पूरा right channel cover कर लेता है. यार लेकिन मतलब I know सादिक भाई ब्राजील फैन है और कहीं ना कहीं उसकी मिस्टेक थी यार 2-3 बार. I have seen final third में, but whenever Anthony loses the ball, you will always see he has the same Rafinha trait. He rushes back. Trait है, I agree. He hounds the ball carrier like a dog, and he's on top of them while allowing the rest of the defense to gel up very well. And there were 2 or 3 instances in the Leeds wala match or se pehle wala match where someone in the midfield lost the ball. Anthony saw that, and before that ball was lost and a counter could be initiated, he ran all the way like from there and came and won the ball and tackled. So he has that recovery ability quite a bit. Fair enough. Achha, by the way, he is very good off the ball. That is something that, hota kya hai? He did that fidget spinning thing once. He's always he offensively, his moves are limited. Cut onto your left, take a shot, or cut onto your left, put in a pass. But if you notice in the last few weeks before he got injured this time, he had added a little dimension. Was what? Left पे कट करता था, एक शॉट लेता था, लेफ्ट पे कट करता था, 2 शॉट लेता था. उसके बाद वो लेफ्ट पे कट करके बॉल रिलीज करता था राइट पे या अंदर की तरफ. And then when he did that got the defense going off, because then he had 3 moves to do with it. कट करके शॉट लेगा, कट करके वाइड फ्लैंक स्विच करेगा, या कट करके अंदर रिलीज करेगा. तो वो चीजें जो है ना, Sancho is a different player in that regard. Sancho does different things, and Sancho he's more of a forward thinker. Sancho का ट्रैक बैक थोड़ा सा ढीला है. हाँ, बिल्कुल. But Sancho attacking wise has got way more variety than Anthony. I will not lie. He has got a whole lot more tools in his kit. Also depends on the team ना सादिक भाई. देखो Anthony in Ajax, ठीक है, he had basically the space and the time. Now he will not get in Manchester United. लेकिन Sancho on the other hand, Dortmund में, because Bundesliga में you kind of got that kind of play, so automatically there were a lot of people kind of supporting there. Anthony might have to do some work there. लेकिन I think Sancho, यहाँ एक मैं बोलना चाहूँगा भाई, what about Elanga यार? The fact is he is kept back.
Elanga, Pelestri kind of people. But do you see them kind of Ilanga's coming in this limited. particular game? Ilanga's more of a speed kind of a guy, but he's very limited. And his more natural tendency is to play in that Rashford channel, left side. He can play the right. We did play in the right, but that was because we didn't have any Just other to do a decent option job. on the right. If you're saying Anthony is not there, you put in one person to do a job, right, on one side, so that you know Ilanga what to पता है expect. कैसा है? Ilanga is like पता नहीं उस मतलब obviously not that caliber, लेकिन आपको पता है चेल्सी में there used to be players like Yiri Yarosek and Jesper Gronkjaer. वो यार बिल्कुल बिल्कुल Pull off ग्रोंकिया तो मतलब फिर भी थोड़ा सा फ्लेयर था. यारोसिक वाज लाइक भाई मतलब he had that thing. do a job, do a job. और and the same thing, Yarosik को आप दोनों तरफ खिला लेते थे, right left दोनों खिला लेते थे. In fact, मैं तो बोलता हूँ even Smerten and all those things, you know, Yarosik and Smerten used to be that super sub sometimes just to do that Exactly. job sometimes. लेकिन कोई नहीं. भाई prediction, yes, we are coming to prediction absolutely. यार सादिक भाई आपने क्या prediction की by the way? देखो मैंने बोला था कि बारसा the match will start off really मतलब initial क्योंकि both teams have a tendency. United first 10-15 minutes takes the time to study the team, and the same happens with Barcelona. So the first 10-15 minutes will be a nervy affair for both the sides. There will be an attack by United, which they will obviously not complete, and there will be an attack by Barca, which obviously they will not finish. But it will be like who's trying to get it. I say Barca takes the leg at Camp Nou 3-1, but won't be like a big 3-1. It will be like एक extra goal आ गया end में, that extra cushion. Okay. When because they'll be leading 2-1 for most of the game, United will be then pushing, trying to get that second goal and then get caught. Because Barca is lethal on counters. वो लोग realize नहीं करते, but Barcelona kills them on counters. I think second leg United will make a comeback because Erik ten Hag has got a very good habit of learning from losses. So far this season, he has shown that from losses he learns brilliantly. So I think United will cover the deficit, but then concede late, 4-3 over 2 legs. I think maybe even in extra time. I would not be surprised. Okay, मैं तो actually penalties call किया हूँ, and I have a strange feeling, you know, I have a strange feeling that this will go down, right down to the wire. मतलब one of those I think matches 4-3 Barcelona, late winner at Old Trafford or in extra time. Wow. You heard it here people. भाई brilliant. भाई सब लोग again मैं बहुत सारे messages star भी किया हूँ, and yes for people mentioning do not spam. Yes, please do not spam. Doesn't help really. लेकिन हाँ सब लोग let's get to 300 likes, and of course consider subscribing as well. It certainly helps the channel. इस वक्त United is, you can say, 10 months or 9 months behind Barcelona in the rebuild. I would say, in fact, more than that, maybe 15-16 months, because Barcelona, when they came in, they other than the financial issues, in terms of the players, they had a fairly clean slate. They just had to add the right players. But I think Nantes is a United defense, Sadiq Bhai. That conceding only 7 in last 21. मतलब it's like almost 2004-5 Chelsea यार. मतलब that was like मैं सोचा था no team मैं देखूंगा in modern day, you know. But पता नहीं, I have a feeling Christensen might get a goal in this 2 legs. कि कोई एक में. Okay, let's see. His goal is coming. और Christensen has warned by the way against Rashford. बोला भाई बच के रहना, Rashford से बोला है. And by the way, meanwhile, Rafinha has said कि यार these are the 2 best teams अगर of form in the world. Christensen को डाल दिया ना Rashford पे, आ जाएगा वो जिसको. I mean, I'm not saying कि Christensen is not a good, but जिस फॉर्म में इस वक्त Rashford है ना. Rashford, I see Rashford the winner, honestly. I mean, एक होता है ना, sometimes you are in that mood कि भाई मतलब anything you touch it's a goal, वो वाली बात है. मतलब he's just in that form right now. No one doubted his talent, but it's just like, you know, that Sadiq Bhai. मतलब लोग वो कहते हैं कि वो दिमाग पे करता है ना ऐसे. Correct, exactly. वो ऐसे करके दिखाता है कि दिमाग का ताला खुल गया है अभी. और वही नहीं है उसके बगल में भी यार भाई देखिए यहाँ पर मैनचेस्टर का डिफेंस देखे तो राफेल वरान, रियल मैड्रिड प्लेयर ब्रो, as it is there. Then you have Casemiro. A fun fact, Varane and Casemiro will again be at Camp Nou playing in full white because United's away kit is full white. Nice one. भाई Sadiq भाई, fun facts man, love that. Anyway, Arao is getting better. भाई देखिए, see that is the thing, it depends on tactics that ETH does. Remember अगर थोड़ा सा लोगों ने मुझे बोला कि भाई when Arao could take out Vinicius, he could take out
I said the one difference that you have, Vinicius is slightly smaller. He's got a whole lot more tricks, but for a defender like Araujo, of his quality, of his ability, and because I also follow Vinicius very closely because obviously the Brazil national team. Right. When Vinicius has always faced issue when someone with his amount of pace can also out physical him. When someone can out body him, can out physical Vinicius, that's when Vinicius suffers. And that's exactly, आप कोई भी मैच देख लो अभी तक जिसमें भी अराहो ने विनिशियस के अगेंस्ट खेला है, the first time he goes and gives him a shoulder barge. The first time when Vinicius is trying to go, he gives a shoulder barge, just lets Vinicius feel that thing, hey, bhai, you try doing that, either you are the bigger man that you fight through it and you fight through the pain, वरना तुझे मार पड़ेगी पूरे मैच में. And that's exactly what he does. With Rashford, the thing is, Rashford is a little bit more physical himself. He pushes back on defender. Now, this would be an interesting matchup to see because if Araujo can outbody Rashford and take him out, I already say he's the best one-on-one defender right now in world football playing at the moment. If he does that to Rashford, फिर तो मतलब no debate. नहीं, यहीं पर थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा कि यार द फैक्ट लिसांड्रो मार्टिनेज नॉट बीइंग अवेलेबल, कहीं ना कहीं आई नो आप सादिक भाई ने बोला लूक शॉ काइंड ऑफ गोज ऑन हिज डार्टिंग रन्स इवन फ्रॉम सेंटर बैक पोजीशन, अगर वहां आ जाता है मलाशा व्हिच इज क्वाइट पॉसिबल, लेकिन वही है लूक शॉ को जो नेचुरल टेंडेंसी होता है विद गिविंग दैट सपोर्ट टू रैशफोर्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक बार्सिलोना माइट गेट द एडवांटेज, और वहीं पर बीइंग एट होम आई थिंक आई कैन सी दैट हैपन. Lisandro is also of the same ilk as Araujo is. His first tackle on anyone is very physical. The first time when Lisandro goes in for a challenge, he just goes in full-blooded and he lets you feel himself. मतलब he's 5'9", but he's a proper boulder of 5'9". सादिक भाई मैं भी अपॉलजी करता हूं यार, आई एम सॉरी यार, मैं खुद आपको याद है मैंने तो भाई मीम चला लिया था, लेकिन अगेन मजाक में चलाया था. He's the best aerial defender in the Premier League. He's so good. He's so good. मतलब he is a proper boulder of a man. मतलब people are already labeling him as is he the next Nemanja Vidic? I know that's a bit too much, but मतलब old man strength होता है ना जो वो उसमें है. And जो Araujo करता है, the same thing this one Licha does for United is he goes and he hits the first tackle really hard. Yeah. But anyway, let's see यार, मतलब अगेन मिस्टेक तो भाई आकाश सबके होते हैं यार, वही है with me, for me passion over mistakes any day यार. मतलब रूडिगर, I know बहुत लोग बोल रहे हैं भाई रूडिगर is a flop, but I would still say that भाई वो eventually he will come out good. And Christensen, मेरे ख्याल से it was all in the mind, नहीं तो he is a fantastic defender. Someone who replaces Thiago Silva in a Champions League final doesn't put a foot wrong. I will be the first one. Ankit bhai knows my point of view on this. It's not me. मुझे पता है आप मेरे लिए नहीं बोल रहे हो, आप दूसरे यूनाइटेड फैंस को बोल रहे हो, and they deserve to listen to that. But Ankit bhai को पता है, I from day one, because I live in a Gulf country, I'm born and bred in a Gulf country, I have literally lived my life on oil money. So I have no qualms in my club getting oil money or any club getting oil money. My only thing is कि I hate FFP कि भाई सबको जो खर्चा करना है करने दो. फ्री मार्केट होना चाहिए. That's my personal और डबल स्टैंडर्ड्स मत करो यार. मतलब आप basically if you are giving ban to a certain club, give to other club also. Like that's the reality of it. We don't have double standards. That's all I'm asking for. पता है असल में नहीं, उधर मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरिंग क्या है. I say Chelsea के accountants and Chelsea के lawyers were not smart enough to find the right loopholes. कहीं ना कहीं से Chelsea भी बच सकता था. अगर इस वक्त मैन सिटी बच जाता है, I say fine, good for them. I appreciate that because that means कि आपके जो laws हैं वो इतने strong नहीं है. There are loopholes and there are technicalities in them. वो बच के निकल गए. I would say blame कि रोमन ने lawyer जो था वो अच्छा हायर नहीं किया था. हाँ, लेकिन अभी तो खैर कर रहे हैं, लेकिन अगेन एट आवर ओन रिस्क. रिमेंबर जो बार्सा भी इन अ वे काइंड ऑफ करी है इन द पास्ट. लाइक सो सी देखो ये साइकिल होता है. वी ऑल सेड दैट 90s में मिलान, 2000 द रियल मैड्रिड, 2010 में मैन सिटी, अभी वापस से चेल्सी. अरे अंकित भाई अभी आयोटा लिख रहा है सस्टेनेबल मॉडल ग्रेटर देन ऑयल मनी. देयर इज नो सस्टेनेबल मॉडल ब्रो. अगर आप 90s में जाओगे और आप 50s 60s में जाओगे तो रियल मैड्रिड डिडंट बिल्ड ऑन अ सस्टेनेबल मॉडल. दे बिल्ड ऑन कैश इंजेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट. Problem was, the thing is that you guys were not alive then, social media was not then there,
उसके आपको रिडैक्टेड डॉक्यूमेंट्स निकाल के पढ़ने पड़ते हैं, आप देखोगे नो क्लब बिकेम बिग just on a sustainable model. Even Barcelona, even Milan was pumped money by the mafiosi. Silvio crazy Berlusconi, money, Silvio Sadiq bhai, Berlusconi. for that time. तो ये हाँ. सारे जो क्लब्स, इवन यूनाइटेड, भाई यूनाइटेड गेम द सिस्टम इन सच अ वे 2002 के बाद जाके पीएल में ये यूनिफॉर्म आया एक्सपेंडिचर, वरना अंकित भैया नोज 90s में यूनाइटेड यूज्ड टू गेम द सिस्टम इन सच अ वे कि मेजॉरिटी जो आपका टीवी राइट्स थे पैसे वो यूनाइटेड को मिलते थे, अपने 45%. तो हर क्लब ने अपने आप Why do को you think Arsene इस पे Wenger build had किया. all those interviews in the late 90s and early 2000s? Sadiq bhai knows हाँ exactly what I'm talking about. भाई, क्योंकि आर्सन यूनाइटेड गेम द सिस्टम बाय गेटिंग द टीवी राइट्स ऑन देम. वही मैं कह रहा हूँ. लेकिन Sadiq bhai, talking about that, you know, before we are going to end, like people bhai, we are going to end maybe 5-10 minutes maximum. सब लोग like कर दीजिए, subscribe कर दीजिए, भूलना मत. And yes, we are live for tonight, watch along as well as pre-match. Sadiq bhai, take over Manchester United, come on, उसी से connect होता है भाई. What is your preference? देखो I काफी know. लोग भाई, my preference तो always has been कि भाई get the biggest, the person who will put the most amount of money into the club and will do the most for the club. मतलब I don't mind if it's American, Turkish, alien, red, blue, white, yellow, orange, whatever. Yeah. So that is the thing. Someone who Everyone cares and was is open to kind of, you know, put in money, not just, मतलब यहाँ पर एक there are allegations कि कहीं ना कहीं I think Elon Musk का जो स्टोरी रहा था, he might take some money, जैसे उसने ट्विटर को लेने के लिए लिया ना, and then put that, and that is danger zone for me. That is danger that is zone. exactly what the Glazers did, and इसीलिए अभी थोड़ा बहुत जिम रैटक्लिफ की तरफ भी थोड़ा सा डिसलाइक इसलिए आ रहा है because he is talking to JP Morgan and the banks कि he is gonna refinance that debt, shift the debt from United onto Ineos. लेकिन अब कल को अगर Ineos का स्टॉक गिर जाता है तो वो डेट कहाँ जाएगा, वापस यूनाइटेड पे. नहीं, लेकिन रैटक्लिफ तो शायद ही he will be able to put a bid of 5 billion or अंकित more, भाई, right? the thing is, इस वक्त हम कतर की बात सुन रहे हैं because कतर is so much in the news. आप Ineos का सुन रहे हो because Ineos has made it public their intention. बट अगर आपको याद हो when Chelsea was being bought, शुरू में आपको पता है एक वो टर्किश बिजनेसमैन का न्यूज आया था जो अब्रामोविच का दोस्त था, वो you were supposed to be Roman's friend. एक वो आया था. उसके बाद फॉर अ लॉन्ग टाइम मार्टिन ब्राउटन वाज इन द लीड. Martin Broughton, yes. Then there was this one. Then the Ricketts family was very much in the lead for वो a long time. मैं खुद स्ट्राइक पर चले गया था, याद है? और फिर वो पागलियूका का नाम आया था जो बॉस्टन सेल्टिक्स का ओनर है. Yes. There was also this Saudi rumor also was there. Correct. Saudi थे. लेकिन टॉड बोली का नाम बहुत एंड में आया, लेकिन जब आया तो फिर बहुत सॉलिडली आया. So these bidding thing क्या होता है, अक्सर इनमें क्या होता है कि जो to put your interest, either you put a proper full bid, yeah, it is अभी bidding is in the soft deadline phase. Soft deadline phase में you just, if you have the money, you just have to send an email with a link to your bank account and your interest. Then they will ask you for the detailed proposal. तो अभी सॉफ्ट बिड्स का टाइम है, फ्राइडे डेडलाइन है, आपको अंदाजा हो जाएगा बाय नेक्स्ट वीक के हु आर द रियल 4-5 पार्टीज हु माइट गेट इट. फिर 2 महीने के अंदर आपको पता चलेगा who gets it, and sometimes the one who wins it is actually has been the most quietest one of them all, because behind the scenes वो बंदा सारे काम कर चुका होता है. लेकिन अगेन मतलब पॉपुलैरिटी तो इसमें आ रही है. अगेन मुझे कुछ बैकग्राउंड है नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू क्लेम कि यार मैं जानता हूँ एग्जैक्टली. आई नो देयर इज कहीं ना कहीं देयर इज, आई डोंट नो टेक्निकली, आई थिंक यहाँ पर चैंपियंस लीग में इशू हो सकता है. आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग पीएसजी और जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, अगर कतारी इन्वेस्टर्स कम इन, आई थिंक नहीं दैट इज ऑफ उसका आज आ गया. अच्छा. उसका आज आ गया. यूएफा एज पर रिपोर्ट्स थ्रू माइक कीगन ने रिपोर्ट किया है, who first reported the Qatari interest, that there is no भाई UEFA को, Ankit bhai, we need to start becoming stop seeing football from a fan perspective and see it from more of a daily life perspective. UEFA की जितनी भी कमिटीज है उसका हेड में नासिर अल खलीफी बैठा हुआ है. नासिर अल खलीफी is the employee of the Amir of Qatar who runs QSI for him. मतलब QSI का जो चेयरमैन या को चेयरमैन है, तो QSI बेसिकली वो उसका नौकर है. तो if Amir of Qatar says to Nasser Al Khalifi कि भाई मुझे करना है ये, he will go talk to Ceferin. Ceferin is like his chaddi buddy right now at this moment. Yep. तो he will go and say कि भाई Qatar wants to buy another club. They will say okay, RB Leipzig वाला ये था, RB Salzburg ये था, this is the same. साइन करके दे देंगे, no conflict of interest, खत्म. That is how the world works यार.
भाई ये क्वेश्चन आया था सादिक भाई के लिए, टाइगर बीस यार, बिग अप यार, क्या हाल है? जूड और भाई चेल्सी तो दोनों दोनों ये के लिए जूड और तैयार है। एंजो दोनों को नहीं लाना चाहिए, दे विल बी आपकी मिडफील्ड कंफ्यूज हो जाएगी बिकॉज दे आर वेरी सिमिलर टाइप ऑफ प्लेयर्स। या वी नीड अ प्रॉपर, मतलब एक बोलते हैं ना डेक्लन राइस काइंड ऑफ गाय, आई वुड से नहीं, दैट इज नहीं। I would say the one guy you guys should reignite your interest in is, and I would love even United या Barca to get him also, because उस तरीके का प्लेयर चाहिए होता है मिडफील्ड में, that is Edson Alvarez from Ajax। यू थिंक अगर सो? मतलब Alvarez आई थिंक कहीं ना Alvarez is कहीं a इट्स, proper destroyer। या नहीं, एंजो Alvarez is a फर्नांडिस कैन डू द यंग फैब्रिगास रोल, मतलब यंग फैब्रिगास यू नो राइट, वो ही हाँ, कैन but डू he दैट needs रोल। ना, but Fabregas के पास Vieira था, फिर Song था, एग्जैक्टली। that is Alvarez। भाई अल्वारेस के पास, लेकिन इन प्रीमियर लीग डू यू सी हिम डूइंग दैट? दैट्स माय ओनली क्वेश्चन। He is very physical, he can handle the Premier League। नहीं, वी वर वेरी इंटरेस्टेड, इनफैक्ट हम मतलब ऑलमोस्ट लेने ही वाले थे, नहीं उससे पहले जकारिया आ गया, पर जकारिया सीम्स लाइक होता है ना, ही सीम्स टू बी मोर फिजिकल, तो वी वेंट फॉर For जकारिया me, ओनली। the two clubs that should go after Edson Alvarez is, one is United, because he could be that proper understudy under Casemiro, who can play with Casemiro, can can spell him in some cup games and play alongside Fred, maybe if we permanent the deal for Sabitzer, because Sabitzer, from the things that he's putting up on social media, he seems to be very very comfortable at United. So he seems to be very happy coming in at United. So let's see what happens. या नीरज, आई बिलीव आपका ऑलरेडी एड्रेस हो गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट्स व्हाट आई थिंक सादिक भाई ऑलरेडी काइंड भाई ऑफ टच्ड these are, अपॉन। देखो पता है नीरज, these are massive conglomerates, मतलब they have got multiple arms, they have got QIA which will be investing into United, they have QSI, but QIA is worth 400 billion अपने आप में, QSI is worth a 200 billion separate, these are multi-trillion dollar investment funds basically, इसके arms हैं, इसके इतने सारे arms हैं, the source is multi-trillion, not multi-billion also, and they have got these investment arms, and when they invest they want to keep all of these sources really high, and what they do they want to, इनका क्या source होता है, because I've been here, they create these big investment firms and these investment funds, and their aim is to compete between each other, they promote competition between their own selves, because once you compete with each other and you know कि भाई हम दोनों इतने अच्छा compete कर सकते हैं, both will rise, like competition breeds success, that's the way how they function. या बिल्कुल भाई। गौरव यहाँ पे पूछा व्हाई माय कमेंट इज नॉट एड्रेस, बाय द वे यार, ऑल द मेंबर्स ऑफ द चैनल, और मैं सब लोग के लिए बोलना चाहूंगा जो भी यहाँ चैनल पर है, फर्स्ट ऑफ ऑल यस, देयर इज अ मेंबरशिप, देयर आर मेंबरशिप पर्क्स एज वेल, एब्सोल्युटली मेंबरशिप स्ट्रीम्स करते हैं, देयर इज अ मेंबरशिप प्रेडिक्शन लीग गोइंग ऑन, देयर इज अ प्राइज फॉर द विनर एज वेल, एंड ऑफ कोर्स मेंबरशिप, आई थिंक देयर आर इमोजीज एज वेल, डू चेक इट आउट पीपल हु वांट यू नो चेक इट आउट एब्सोल्युटली, प्लस देयर आर लॉट ऑफ अदर कन्वर्सेशन करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, वी हैव अ मेंबरशिप ग्रुप। तो गौरव यहाँ बोलना चाहूंगा भाई, हमने I could highlight as much as I could, trust me bro, लेकिन साथ साथ में अगर आप एक दफा टोटली दोबारा ऑफ पूछ टॉपिक लो, मैं बोलते हो देख के तो आपका, आप छोटे में लिख दो सवाल, मैं आपका जवाब देता हूँ, लेकिन फिर जल्दी लिख दो बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट है। हाँ एग्जैक्टली, नहीं मैं डायरेक्टली बोलता है गौरव, मतलब if it's a question which is totally unrelated to what we are discussing or the topic यार, नहीं, we लेकिन try बिग to अप टू avoid when गौरव, there's so much to गौरव discuss। इज वेरी रेगुलर ऑन ऑल द चैनल्स, ऑफ कोर्स इसलिए मैं and he's शाउट आउट very डेफिनेटली good, दे रहा हूँ गौरव को, नो टू वेज अबाउट इट। so shout out। बिल्कुल, आई थिंक ही वाज आस्किंग अबाउट चेल्सी इन पर्टिकुलर, बट यार टू एंड द स्ट्रीम यहाँ पर संजीव यहाँ पूछ रहे हैं अबाउट अ कंबाइंड लाइनअप बारसा यूनाइटेड की, मतलब कितने लोग जाएंगे, मतलब अभी तो करंटली ऑन फॉर्म, यू वुड टेक द बारसा डिफेंस एंड मे बी लिसांड्रो, मे बी विद क्रिस्टियनसन, यार राहो, why not Varane? Varane has been brilliant। एक्चुअली यार मे बी देखो यार वरान, गोलकीपर तो टर स्टेगन, गोलकीपर तो टर स्टेगन, नो डाउट नो क्वेश्चन, या गोलकीपर टर बेस्ट इन स्टेगन, द वर्ल्ड स्ट्राइकर राइट नाउ ऑन लेवन। फॉर्म, यू कैन आर्ग्यू। Let's fill out the easy slots। गोलकीपर टर स्टेगन, स्ट्राइकर इज लेवेंडोव्स्की, ओके ठीक है ये हो गया। वन ऑफ द सेंटर बैक्स हैज टू बी, ओके राइट बैक डाल दो रोनाल्ड अराहो को, ठीक है, आई डोंट थिंक मेक डालो सेंस, वैन बिसाका कम्स अप ऑन दैट। एक सेंटर बैक हैज टू बी क्रिस्टेंसन ओवर कुंडे, आई थिंक ऑन बिकॉज ही हैज फॉर्म प्लेड द डेफिनेटली। फुल सीजन, क्रिस्टेंसन से थोड़ा ज्यादा, आई मीन कुंडे क्रिस्टेंसन में क्रिस्टेंसन हैज बीन द मोर रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ अ साइनिंग। दूसरा सेंटर बैक, आई थिंक पीपल शुड नॉट हैव एन इशू इफ आई पुट लीचा, मतलब ऑन फॉर्म मे बी वरान, बट लीचा काइंड ऑफ लेफ्ट सेंटर बैक आई थिंक सूट्स मोर विद लीचा, क्रिस्टियन बीइंग हाँ राइट सेंटर बैक। क्रिस्टेंसन राइट सेंटर बैक, लीचा
ल्यूक शॉ हाँ, लेफ्ट बैक, वो जो कर रहा है ना इस वक्त, वो जो सब कर रहा है, बाल्डे इज गुड, हिज पेस एवरीथिंग, बट द ओवरऑल गेम जो इस वक्त ल्यूक शॉ पिछले 7-8 हफ्तों से खेल रहा है, राइट। that is, I mean, Balde, yes, maybe in the next year with further development, Balde will be beyond even him. He may challenge Alphonso Davies for all we know. CDM, Casemiro, the double Gavi Pedri. Gavi Pedri, we don't have anyone as good फ्रेंकी as नहीं, Bruno, Ericsson. Gavi Pedri. Gavi Pedri. गावी पड़ रही क्या, चलो ठीक है, हाँ इस साइड डाल के गावी को इस साइड डाल दे क्या, चलो एनीवे डजंट मैटर। एंड फॉरवर्ड, क्योंकि फॉरवर्ड में ना यार, एक मिनट, फ्रैंकी डालो, फ्रैंकी डालो। एक्चुअली या फ्रेंकी और गावी को लेफ्ट विंग ना, करेक्ट, हाँ, ये कर लेकिन सकते हैं राशि को अपन। और राइट विंग रैशफोर्ड दोनों ही खेल रहा, मतलब ही उसका तो काम ही गोल मारना है सर। गावी एक्चुअली एनीवे ही इज अ गुड वर्कर एनी साइड, तो डाल दो, आई थिंक ऑन मेरिट ही डिजर्व्स इट टू बी ऑनेस्ट। एंड यू कांट कीप रैशफोर्ड आउट। हाँ एब्सोल्युटली भाई, आई थिंक दिस मेक्स इट फाइन। और डिफरेंस बिटवीन पेप यार एंड जावी ब्रूनो इज, सिस्टम, यार बात ये है कि ब्रूनो अगेंस्ट फ्रैंकी, पेड्री, गावी, मतलब इट्स अ वेरी, आई नो या ब्रूनो विल बी द 12th मैन, द फर्स्ट सब ऑफ द बेंच, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ मतलब ऑन फॉर्म यू कैन आर्ग्यू मे बी ब्रूनो ओवर गावी, मे बी जस्ट, अगर ये, हाँ, इफ यू पुट ब्रूनो ओवर गावी फिर तो बहुत बैलेंस हो जाएगा, बिकॉज रैशफोर्ड विल गो टू द लेफ्ट एंड ब्रूनो विल मूव टू द राइट। करेक्ट, 4-2-3-1 काइंड ऑफ थिंग। Yeah, Luke Shaw is having laser die. Luke Shaw is having a slightly better overall season than Balde. चलो, इट कुड बी ब्रूनो आल्सो बाय द वे, लेकिन फॉर्मेशन चेंज होगा, लेकिन अगेन वो रोटेशन में कर सकते हैं अपन, कोई नहीं भाई, लेकिन नहीं, ब्रिलियंट स्टफ यार, I think मतलब I अगेन think हमने I think I बहुत, think I think again Gavi has been revolutionary. मतलब what he did in the, I don't know Sadiq bhai, I think you listen to my streams a lot, right? I'm a huge Gavi fan, मतलब I have gone on record saying that eventually क्योंकि Gavi, क्योंकि Rashford can do the Rafinha role and tucking in हाँ, from both the sides. Leva can be there क्योंकि technically both systems are very similar. Both नहीं systems are fair very enough, similar. Just the change is in the directness. fair enough, तो भाई कितने, as per the lineup who's winning? As per the lineup Gaurav, I think it is, Gaurav, I agree कि Chelsea, if Chelsea is able to do that, they will definitely do it. लेकिन वो ये कि अगर आप डॉर्टमंड के विंग बैक्स को प्रेस करोगे, डॉर्टमंड का मिडफील्ड है वो बहुत प्रेस रेजिस्टेंट है। डॉर्टमंड इज usually teams get the ball inside and they go wide. Dortmund gets the ball wide and then goes in. Because they have Reina, they have got Royce, they have got Brandt, they have got Bellingham. आगे उनके पास स्ट्राइकर भी काफी फिजिकल और वो है, मोबाइल है। हालर इज अ मोबाइल स्ट्राइकर। Haller, Modest is not too bad, Modeste is not bad. Adeyemi is also very physical, and this Adeyemi is there, new kid PC, who comes off the bench like a Garnacho does for वो United, Gittins, Giddens. हाँ he's अभी तो good. हमने गर्नाचो की बात नहीं की। गर्नाचो could be a game changer off the bench. He will actually, he will, मतलब वो कहीं ना कहीं हम जो गावी का बोल रहे थे ना, आई थिंक ही डज द डर्टी वर्क, गर्नाचो काइंड ऑफ कैन बी द गाय हु कैन गेट टू द नेक्स्ट लेवल पता है इन टर्म्स गर्नाचो ऑफ का क्या है? दैट। Garnacho has got the benefit of youth. What we say na, the vulgarities of youth on his side. कि he plays with a free mind. या टेंशन नहीं है उसको। वो एक जो बचपन में होता है ना, केयर फ्री एटीट्यूड, वो केयर फ्री खेलता है बिल्कुल। यार मतलब I तो I'm really having a thing for wingers, and a lot of wingers are exciting, wingers in the Premier League as well as Europa League, Champions League. भाई great stuff. सारे भाई, before ending the stream, last एक prediction. Come on, let's have Arsenal versus Man City tonight and the title. मैं तो हर हफ्ते चेंज कर रहा हूँ। आपका पता नहीं क्या हाल है अभी। Momentum, City, ड्रॉ, United बोला, sorry, 2-2, City. 2-2 ड्रॉ। Draw. Okay, but will a draw be enough considering they are yet to play City for one more game at the Etihad? इनफ या नहीं होगा वो नहीं पता, बट ये मैच मुझे ड्रॉ लगता है, बिकॉज आर्सेनल विल बी, बिकॉज आर्टेटा वुड हैव बीन पिस्ड। अगर आप उसके इंटरव्यूज देखो, पीसी देखो, तो ही विल हैव आर्सेनल pumped up for it, and Pep is chasing you, so Pep will have City pumped up for it, and these two teams 11 to 11 match brilliantly. So it's very difficult to pick a winner between them. It will be a 2-2 draw. I think people are looking at Dortmund Chelsea UCL wale match. I think the best match tonight is Arsenal City.
हाँ भाई, हम हैविंग सेड दैट अगेन आई एम सेइंग यस डेफिनेटली हम वॉच अलोंग में फोकस Yes, करेंगे Akash, I ऑब्वियसली also want to चेल्सी। draw. I also want to draw. हाँ मतलब आई एम स्टिल सेइंग कि यार द टाइटल रेस इज वाइड ओपन, आई एम स्टिल सेइंग दैट। लेकिन हाँ, हम उस पर भी रिएक्ट करेंगे एब्सोल्युटली, आर्सेनल सिटी भी हम देखेंगे, बट ऑफ कोर्स एंड फॉर पीपल है राज, अगेन एक वन मिनट, ऑफ द राज सिंह, मैंने ये नहीं बोला गर्नाचो बिफोर गावी। आई सेड गर्नाचो कुड बी अ गेम चेंजर। और अगर आपको गाली देनी है तो आप गाली दे दो, कोई मसला नहीं है, भाई। हम प्यार से आपकी गाली सुन लेंगे। नहीं, आई थिंक राज सिंह गॉट द नेम रॉन्ग, आई टुक द नेम ऑफ गावी और मैं रीजन बताता हूँ उसका। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यार, गावी हैज डन मल्टीपल थिंग्स विद हिज वर्क रेट बीइंग क्रेजीली गुड। और व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यहाँ पर गर्नाचो इफ ही वर्क्स ऑन अ लिटिल बिट कपल ऑफ एस्पेक्ट्स ना, ही कैन एक्चुअली रियली मतलब एलिवेट कर सकता है अपने आप को। देखो विंगर्स बहुत सारे हैं अभी, लेकिन इफ यू आर गेटिंग दैट डर्टी एलिमेंट प्लस द स्किल एलिमेंट, आई थिंक दैट इज व्हाट मैनचेस्टर यूनाइटेड वे हुआ है यार। विंगर्स हम ऑल आई वी थिंक नो दैट वी आर वो, टॉकिंग अबाउट मैंने क्या बोला, गर्नाचो कैन बी अ गेम चेंजर ऑफ द बेंच। भाई गावी इज अ बेंच। 90 मिनट प्लेयर, मतलब यू कांट कंपेयर अ 90 मिनट प्लेयर विथ अ 30 मिनट प्लेयर, वो वाली बात मैं बोल रहा हूँ। राइट ऑफ द एग्जैक्टली। बेंच, ऑफ द बेंच गेम चेंजर गावी तो मतलब भाई जॉइंट स्क्वाड में ही वाज देयर इन द स्टार्टिंग लाइनअप। तो तो देयर वही इज नहीं यार, मतलब मतलब वी नो व्हाट इट इज। कंपेयर नहीं करना है, मतलब गावी गर्नाचो यू कांट इवन कंपेयर भैया। इस वक्त तो कंपैरिजन ही नहीं है दोनों का। गर्नाचो इज जस्ट स्टार्टिंग, गर्नाचो उधर है जहां गावी लास्ट ईयर के शुरू में था। राइट, इट टेक टाइम यार, बट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ प्रॉमिस। लेकिन यार ग्रेट टू हैव यू सादिक भाई, आई नो भाई काफी मेरा लंबी नेट स्ट्रीम दिया हुई, बट एवरीवन इन द चैट यार अगेन सादिक भाई ओपी हो जाए इन द चैट, एंड आई नो अपना ड्यू है द हु एम आई समथिंग दैट वी हैव एम टू आई डू बैक प्लस एट द सेम अंकित टाइम। भाई? क्या चीज? कैन यू हियर मी? कैन या यू आई हियर कैन मी? हियर यू, आई कैन अच्छा, हियर नहीं, यू। थोड़ी देर के लिए मेरा नेट अटका था, ओके ओके, मुझे आपका लगा था शायद होगा, मैं कोई गया नहीं। हूँ। हाँ बट बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैंने स्टार करके रखा है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू एड्रेस व्हेन वी डू द वॉच अलोंग इन प्री मैच टुनाइट। तो भाई सब लोग जुड़ना, दैट इज अबाउट 12:15 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हम लाइव है ऑलरेडी, पेज सेटअप है। सेट योर रिमाइंडर, तो कैसे करेंगे, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन और लाइक कर दीजिए स्ट्रीम को। एंड ऑफ कोर्स अगर आप लेट ज्वाइन कर रहे हो, वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट इन द स्ट्रीम, सो मिस नहीं करना। एब्सोल्युटली ग्रेट स्ट्रीम, एब्सोल्युटली सादिक भाई। I चलो know that अंकित भाई, this is due, but we have to do lots of this and much more in the further weeks. We were नहीं looking for an डेफिनेटली। excuse, yeah, with Europa League and Champions League in back. What could be better? Because नहीं, World Cup कल had रात taken को a stream. एक्चुअली कल रात को मेरा मूड हो रहा था मैं आपको मैसेज भेजूं टू जॉइन यूएन फतेह, लेकिन थोड़ी देर वो मैच देखने के बाद इतनी जोर की नींद आई ना, मैंने बोला यार मैं स्ट्रीम पे I सो thought जाऊंगा। so. I thought so. बोला नहीं, मैं you're स्ट्रीम पे always सो welcome. जाऊंगा। You know it, यार. Come on. मतलब I always say that some of the OGs of the channel are always here. मतलब it's totally up to you guys, भाई. But again, everyone watching as well, thanks and all the best, यार, for all the Barca fans and Manchester United fans. And I know Sadiq भाई double all the best आपको तो. That's something great. हम कल भी होंगे live, but आज रात को obviously यार सादिक भाई please give your blessings to Chelsea एंड यार. मतलब who एवरीवन do or वाज die है होपिंग manager. फॉर दैट जर्सी। अनफॉर्चुनेटली बारसा नाइकी ब्रांड है और यूनाइटेड एडिडास ब्रांड है, तो व्हेन आई टुक द जर्सी टू द टेलर, वो लोग का पीछे का सिलाई जो है वो बिल्कुल मैच नहीं करता, तो ही कैन नॉट स्टिच देम टुगेदर। मतलब वो स्टिच करेगा तो बिल्कुल। वो बहुत ज़्यादा अजीब सी हो जाएगी, मतलब वो ऐसा हो सकता है मिड स्ट्रीम फट जाए या कुछ हो जाए तो फिर गड़बड़ होगी। तो इसीलिए आई सेड रहने दो अभी। चलो चलो कोई नहीं। चलो भाई अभी के लिए इतना ही है, बट अगेन मैं आई ट्राई एंड एड्रेस द क्वेश्चंस व्हिच आई माइट हैव मिस्ड कमिंग टू द मिडनाइट स्ट्रीम। और भाई अगेन लेट्स होप दैट वी विन टुनाइट, एंड ऑफ कोर्स सादिक भाई जस्ट एंजॉय द मैच यार। मैं तो इतना ही बोलता हूँ, ऐसे मैचेस अरे रोज रोज मैं नहीं आते, तो जस्ट एंजॉय इट। इस मैच में क्या है पता है, मैं जब बारसा का मैच देखता हूँ उन्हें टेंशन होती है, यार ये अटैक पड़ रहा है, गोल ना हो जाए, गोल ना हो जाए। उधर यूनाइटेड का देखता हूँ अटैक पड़ रहा है, गोल ना हो, लाइक आई एम वेरी ऑन पिन्स एंड नीडल्स। ये मैच गोल हो रहा है, जिधर से भी हो रहा है अपना ही हो रहा है। नहीं वो बेसिकली वो देखा है वो जो रील, बेसिकली यू हैव वन जर्सी नेक्स्ट टू यू, वो गोल और तो भाई ये डाल दिया एक बार, अरे ये अभी डाल हुआ दिया। था ना अभी सुपर बोल में हाँ हाँ। there's a lady na the there were the Kelshi brothers, they're both अच्छा stars for opposite teams. Philadelphia Eagles में बड़ा भाई खेलता है ट्रैविस, सॉरी, जेसन केल्सी, and Travis Kelce plays for the Chiefs, and they're both हम्म। stars for the teams in a उसमें। बट हुआ ये कि आफ्टर द मैच उनकी माँ जो है ना, वो जाके पहले जो भाई जीता उसको गले मिलती, who's the younger brother by a couple of years, उसको गले करती है। उधर से बड़ा बेटा आ रहा होता है, फिर उसको जाके कंसोल करती है जो हार गया होता है।
इंटरेस्टिंग स्टफ। चलो भाई, उसी पर we'll end this stream for now and we'll see you soon. It's just about what? Just about 2.5 hours we'll be live. But again, Sadiq bhai, thanks for coming on. And of course भाई, come on, अब द चेल्स आज रात को, and कल करेंगे भाई विस्कायल बारसा, और of course go मैन यूनाइटेड। अभी के लिए इतना ही है, चलो मैं भाई, तो बोल रहा हूँ नहीं। भाई, जीजी बारसा विस्का एल मैन यूनाइटेड। हाँ बट लेकिन यार आज रात को चाहिए भाई, वी नीड अ विक्ट्री। चलो।